नमस्कार, वेलकम टू आरसीआई नवशिखर चैनल। आरसीआई के नवशिखर चैनल में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज के हमारे प्रोग्राम का शीर्षक है टीचिंग प्री मैथ स्किल्स। एंड फॉर डिस्कशन ओवर दिस टॉपिक, टुडे वी हैव विद अस मिसेस प्रीति कपूर। वेलकम टू आरसीआई नवशिखर चैनल मैम। थैंक यू। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों को सूचित करना चाहूँगी कि वो हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-2008। हमारा स्टूडियो नंबर है 265-11-613। हमारा फैक्स नंबर है 265-11-609। As it is rightly said by some person, the state of knowledge exists, but the will, the capacity and methods are usually the problem. So it is advisable to devise certain special methods in order to teach the mentally retarded individuals. So आज हम मैम से यही पूछते हैं कि वो हमें प्री मैथ स्किल्स के बारे में क्या बताएंगे। Today we are basically going to talk about how young children learn maths. उनको क्या मज़ा आता है सीखने में, वो किस तरह से अपने environment को चारों तरफ देखते रहते हैं, और वो जो हम समझ रहे हैं कि वो खेल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बैठे हुए हैं, बट वो अपनी तरफ से बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं। बहुत उनकी incidental learning बहुत ज़्यादा होती है, and very very simple and very very playful ways they learn a lot of things. So basically today we are going to talk about how skills in maths can be simplified for the mentally handicapped children, just like all other young children learn. They will pretty much learn in the very same way actually, but for them the skills will need to be simplified. You will need to take a longer time doing everything with our mentally handicapped children. It is as if things are going in slow motion for a while. They need more practice, they need a more loving and caring environment, they need a lot of patience, and they need to be left themselves to just learn a lot by themselves. So what we'll start with today is insights into principles of early maths. Now I want to ask one thing. What do most of us understand by maths? जब मैं maths बोलती हूँ तो क्या समझ में आता है? Just calculations in order to carry on day-to-day activities. Yes. Like money skills and shapes, number concept, counting. Yes. So there's a lot of counting and organizing and numbers and size and measurement and big and small and heavy and light and a lot of speed and all these concepts that you really mean when you say maths. Most of us think of different things when we say maths actually. Some of us feel that, oh my God, that teacher who had a big stick with her when we were learning maths. But a lot of us have enjoyed the learning of maths once we have got the hang of it. So one thing is for sure, that in all the nature around you, that all the maths that you see, all the numbers that you see, this is the best way, maths is the best way that man has learned to organize his environment. Even in the kitchen you'll see, when you put out your utensils and all, बर्तन वगैरह आप सजाते हो किचन में साफ करके, तो आप बड़े वाले को पीछे रखते हो, छोटे वाले को आगे रखते हो, आप सारे कैटेगरीज एंड सेट्स बनाते हो, क्लासिफिकेशन करते हो, आप बड़े से छोटे को करते हो, सीरिएशन करते हो, आप शेप्स के हिसाब से रखते हो, गोल कटोरियाँ एक तरफ रखते हो और बड़े कटोरे दूसरी तरफ रखते हो, छोटे ग्लासेस एक साइड रखते हो. So all the time you're organizing your environment with maths. Maths is a good way to organize your environment. Actually, for all cultures, all tribes across the universe, across the world, that is the best way that man has learnt. In fact, even tribes जिनको बहुत ज़्यादा education पर exposure नहीं है, even they have been known to organize themselves in that way. So have you seen some farmers and all, वो काट के अपना फसल को एक साइड पे रख रहे हैं? Have you seen any scene like that ever? जब कभी ट्रेन से ट्रैवल किया है? You have seen? Yeah. So what do? Do they just make a bundle and make a bundle of any size and throw it anywhere? No, it's not like that. Instead they organize
all the crops which they have harvested, they organize into bundles. Yes, into equal size size bundles, more or less. Now they are not weighing, they are not counting, Yeah. but somewhat they organize things, okay, in a mathematical kind of way. They have 20 bundles at the bottom, then on the top they'll have a few, then they'll have lesser at the top, and they'll make a pyramid kind of a formation and then cover it with something, Right. okay, to protect it from the rain and all. So even tribes, even classes of people who we consider are not so formally educated, even they are using maths all the time. Right. You know, even when they keep house in their kitchen, they organize their kitchen the same way that we organize our kitchen. Okay, when they keep their clothes in a baksa, okay, when they are traveling or otherwise, झोंपड़ी में भी बक्सा होगा ना, तो उसमें भी कपड़े जो हैं वो एक सेट्स के हिसाब से लगे होंगे. They'll be in a particular size, neatly folded, put together, बड़े वाले नीचे, छोटे वाले ऊपर. So they are organize all the time. Yeah. And a lot of maths is going into it, formally or informally. But ma'am, like you said, it's incidental learning. Yeah. Normal children, they acquire incidental learning and imitative learning by seeing their adults. Yeah. But what about mentally retarded? Like they acquire that incidental and imitative learning? Yeah, they definitely acquire a lot of imitative learning. And incidental learning is that you leave the children with the material, with the right kind of material at the right age, and then they themselves will learn things from it. You know, you need to just put in a little bit. We'll be talking a lot about that later. Okay. You will just need to just guide them a little bit and then let them play. Let them just play. Let them just play. Like nobody has taught them कि चाकू से हाथ कट जाएगा. Okay, but कभी किसी का देखा था, कट गया था, ध्यान रह गया, टीवी में देखा, एड में देखा, मम्मी ने बताया, पता लग गया हाथ कट जाएगा चाकू से. So that is incidental learning. Okay. Okay. Now this talk that we are going to have today is going to be organized again. I'm talking of organizing again. Right. Okay. So we'll be talking about 4 things basically. Okay. The child's point of view, that is learning versus teaching. Learning, incidental learning versus formal teaching. Okay. Okay. Then we'll be talking about number work. Then we'll be talking about activity based learning and teaching, how to use the environment, what are the kind of games, what are the kind of activities that can facilitate this learning, and also we'll be discussing the teacher's role in this whole thing. But ma'am, like you said, incidental learning and formal teaching. Incidental learning, you gave an example, we have given something to the child. Yeah. And the child will be playing and learning the things from it. Yeah. So how come the role of formal teaching comes here? That is exactly what we are going to talk about. Learning versus formal teaching. Okay. Okay. Incidental learning as opposed to formal teaching. Okay. Okay. Right. What we think we are teaching. Okay, and what the child sees as his learning. Teaching is the teacher's point of view. Learning is the child's point of view. Rightly so. But ma'am, if a child is having a problem behavior and like head banging and spitting, and if we are giving something to the child to play, so in that case incidental learning will be hampered or not? It could be hampered a lot by behavioral problems. So the behavioral problems have to be tackled. They have to be, you have to see that it's a safe environment for one, and then you have to, the behavior will come in the way of learning. Okay. So it has to be very conducive to learning. The learning situations have to be very conducive to the kind of behavior that is going on. You know, you have to, the teacher child balance or rapport, has to be really good. She or he have to be able to understand what's going on in the child's mind. Why is he behaving like that? Right. There has to be a reason. There always is a reason. There always is a reason, whether we are able to tackle it at that point of time or no. But there is a reason. So for behavioral behavior modification techniques and all, that's actually it's really outside the thing of this topic right now. But yeah, like you said, if it interferes with it, then we have to tackle it.
Okay, if it interferes with learning, all learning will be incomplete otherwise. Right. So first Right? behavioral problem have to be tackled. Yeah, they have to be tackled. Okay. Okay. Okay, so now we are going to talk about the child's point of view. What does the child think about maths? What does he think that's going on? Now, I want to draw your attention to something. Okay? Okay. Nature. Prakriti. Okay? Okay. Now, if you look around you, if you look just around you, think you're outside in a park or something like जहाँ पर बहुत तुमको nature दिखाई दे रहा है. Okay? Lots of things. So what do you see there? Different sizes of plants, trees. Okay, Kriti, now I want you to think that you're a little child, say you're a 2.5-year-old child. Okay? Okay. Now as a 2.5-year-old child, what all can you see? The different things presented by nature. Like? Like flowers, trees, Yes. animals, Okay, so different kinds of flowers? different kinds of Flowers, flowers, yeah. different kinds of trees, Yeah. leaves, Leaves, yeah. animals. Hmm. Okay? Hmm. Something else that you may be seeing in the park? Maybe persons moving around here Yeah, and there, yeah, fat, big, yeah. thin. Okay, about nature, what more about nature in the park? These are all like natural Okay, aspects. yeah, okay, maybe some water bodies, and there may be different kinds of mud and stones and sticks and things like that also in the Right. park. The grass, somewhere the grass is very tall on one side, short on one side, and things like that. Now, when a child looks around him, okay, not inside a classroom, not inside a home, but outside, he just looks around him in his gaze of wonder, he's looking around him, and he sees that, why is it that all these yellow flowers, these bell-like flowers, they are growing from similar trees. All these trees with yellow flowers seem to be having the same kind of leaves, and they are approximately the same in size, the flowers. The trees are approximately the same in size. Okay? Right. Then he sees another different kind of trees. So they are very tall trees now. Now he looks up in wonderment. Okay? But what does he see? There are no flowers on these trees. And there are so many trees like this. They all have the same leaves, like gulmohar Right. leaves. They all have the same leaves. They have similar kind of tree trunks, very similar branches, and all the leaves that have fallen under these trees are also the same. Okay, so this is a category. This is a group. Now he's seeing that different trees will have different kind of leaves, right? Different flowers will grow in sets on different trees. Okay, different birds will make different kind of nests. Right. Okay, in different seasons, different birds will be flocking together, going away together, whatever. Okay, most birds, they move in groups. Okay, animals again will be moving around in somewhat in groups. We often find stray dogs moving around in groups. Right. The child suddenly sees, oh, all these dogs have a certain number of legs. All these dogs have these 2 ears. Okay, all these dogs have, well, somewhat similar kind of tails. And they all speak in the same way. Okay, they bark in the same way. Right. So around him, it's in nature. He finds that leaves, there are many leaves that are folded in half. Okay, when they open out, they're exactly the same. Right. Okay, there may be big leaves folded in half, there may be small leaves folded in half. But when they open out, they all look the same, the shape is the same. Most new leaves will have that same light green color. Right, so he's seeing the little child. Remember, you were the little child? Okay? Somewhat. Yeah, so that little child is looking up in wonder, looking all around him, and just learning maths from nature. Okay, similar things go together. There are sets. Right. Okay, even long before he is able to count,
He's ordained to learn it. He has to learn maths. He will learn maths. Formally or informally, he will learn maths. Any child left to himself, left with the environment, will learn maths. It is in nature. He just has to learn it. He cannot escape it. In a way, it's like breathing. Right. He cannot escape it. Wherever he goes, he will find some aspect of nature and he will learn maths from there. Just observing it, he will learn a lot. Also, maths is a science. Now, how is it a science? Science of category, form and order. Okay, but they always say maths and science together. Subjects are also like that. You have commerce, or you have arts, or you have maths and science. Yeah. Okay, science and maths, maths or science, whichever way. Even right? physics and chemistry. also have maths, Yeah. Okay, so they go together. Maths and science go together. Okay. Right. So जैसे विज्ञान है, जैसे ना हम लोग बोलते हैं साइंस इज विज्ञान. Okay, so गणित भी एक तरह का विज्ञान ही है. Okay, it's a kind of a science. Why is it like a science now, and how is it like a science? Because maybe everything is having a particular logic and reason behind it. Right, absolutely right. Just like in science, there is this element of logical reasoning. Right. If you do this with this chemical, then in this time, this is the reaction that you're going to get. Okay. Similarly, very similarly, in maths, also there are rules that are followed in maths. Right. Okay. If you do this with this number, if you add so much to this number, then this is what you're going to get. If you subtract so much from this number, then this is what you're going to get. And it remains the same, like science, it remains the same. Those rules can be formulated. Okay, it just stays unchanged. So there is this element of logical reasoning. If this happens, then this is going to happen. If that happens, well, numbers and science will go side by side. Another very important element in maths that makes it like science is the discovery element in it. Just suddenly hitting upon it. It's, in the lab in science, okay, some experiments are going on and then some discovery is made. Oh, when you put this in this test tube and you add another chemical to it, this is the kind of reaction that takes place. This is the color of gas that comes out, and this is the effervescence that happens for so long a time. Right. Okay, things like that. Similarly for maths, this discovery is that, okay, 3 plus 2 is 5. Okay, 3 plus 2 is 5. I'm doing it. A small child is learning. 2 plus 3 is 5. 3 plus 2 is 5. Suddenly he hits upon this discovery. Oh, 3 plus 2 and 2 plus 3 are the same thing. Right. It means the same thing. So this element of discovery comes into it. Okay, he just discovered a new rule in maths. It's been there for some time. Okay, like for most discoveries, the things have been there. Okay, but they're being discovered. Right. They were there, but the cover is being taken out. So they are being discovered. Okay, similarly in maths. So that is how maths and science, they go together, right? Now when we talk of young kids maths, what is maths for young kids? Just matching the numbers or counting, backward counting, forward counting. Yes. So a lot of counting. Counting is the core of kids maths. It is at the center of all the maths that they are going to learn, all the maths that they are going to do at least for the years from 2 years to about 5 years of age. At least till 5 years of age. They are going to count and count and count a lot. Have you seen kids going up the stairs? Yeah. What do they do? They just count and then move ahead. They they count usually and then go upstairs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, or they'll be 1, 2, 3, or saying poems at the same time, counting rhymes at the same time. Even if they're skipping stairs, sometimes they jump up skipping stairs and all. So what are they doing then? Even then they're counting.
Okay. Or jumping a rope, like. Yeah. Whatever they're doing, they're counting. Whatever they're doing. If they go into a new house, into somebody's house, then they start counting the stairs there. When they go there, they start counting the fans in the room. And then they count the lights in the room. Right. Okay. Then they count the windows in the room. Then they count the doors around them. Okay. They start counting the glasses that are being served. You know, water is being served, now they start counting the glasses. Okay. And in wonder, sometimes they start counting the hair on their head. Okay. And they start counting the stars in the sky. Right. And their counting is a lot of wonder. There are smaller numbers and there are bigger numbers that they are counting. And in fact, when they sit and talk amongst themselves, you know, they often say, you know the biggest number? The biggest number ever? Somebody will come up with some name for a big number, and the other one will say, no, it is, suppose a child says, Shank is the biggest number. Then another one will say, no, Mahashank is the biggest number. So just how big numbers can be, how much counting there is around, what all can be counted, how much can be counted. This is the core of their maths. Counting. So for handicapped children, for mentally handicapped children, like for all young children, they need to be given a lot of opportunity to count. We have to provide them the opportunities, basically. Let them do. Chance do karne ka. Because they're not able to acquire that from the things happening around them. So we need to give them opportunities. Yeah, they need to be given a lot of opportunities. Unko normal opportunities miss out ho jata hai. Because those early years when children are learning, this is all pre-math skills. So it's a lot of early learning. Right. So when they're learning all these things, at that time, our disabled children are either going through some medical problems, or their parents are very upset about having a differently abled child in the house, and they're running from doctor to doctor, going around, finding out why is it so, kab theek hoga, kitna time lagega, kahan dawai hai, operation karane se theek ho jayega kya, all these things. So, and then added to this, the child may be having convulsions, the child may be slow himself, Right. He himself is going through some medical issues, right? So uska sara rate of learning development becomes slow. So all the opportunities that he could get from the environment, he's not getting all those opportunities at that age when he should be getting it. Okay. We were talking about maths. Like we said, the basis of all maths is counting, kids ka. And also the basis of all maths. For about the first 3 years of schooling, okay, if we say nursery, KG, and then class 1, say, there's a lot of addition, there's a lot of subtraction. Maybe class 1 and 2 onwards, there'll be a lot of multiplication and division. And this will continue for some time. So they'll just do a lot of that. They'll make a very strong foundation doing all that. Okay? Yeah. And that is where their whole math structure is going to stand now. Okay, it's like making just a neev dalte. It's like making a very strong neev, allowing them to do a lot of counting, allowing them to handle material, play with material, just telling them a little bit when needed. Like we say in the case of mentally retarded, mastery of one particular skill and then progress on to next. Yes. Same is the case. Yes. First they have to learn the skill, then it has to be generalized. Okay. Now, about young children, like for mentally handicapped children also, they search for meaning in a confused number world. Now, what this means is that all around them, they're listening to numbers all the time. People are talking about, वो बड़ा है, उसको छोटा चम्मच दे दो. Okay. अरे तुम तो इतने लंबे हो गए, हाँ? Oh my God, so many biscuits. Oh no, you can't have this big bottle of Coca-Cola or whatever cold drink. Okay. Oh, what have you done? You have dropped all the things. Okay. Now please pick up some clothes from here.
Right. Okay, so they are listening to numbers and things related to numbers. Kitna mehenga, kitna sasta. No, you can't buy this toy. This is too expensive. Okay, acha isko le lo, ye sasta hai. Okay, things like that they're listening to all the time. Even when the mother is talking to the maid, they are listening to things. Itna महंगी हो गई सब्जी. So the mother will probably say, okay, तुम्हारा salary थोड़ा बढ़ा देते हैं. Right? Right. So they are listening to money and number and size and Quantities. things, quantities, volume, capacities, measurement, weights. Okay, so they'll. But what they are confused about is, what is this? You know, कभी तो इसको बड़ा बोलते हो, इसको बड़ा बोलते हो कभी तो, हाँ? और कभी इसको बड़ा बोलते हो, ओके? और कभी इसको बड़ा बोलते हो. जब इसको बड़ा बोलते हो तो जिसको बड़ा बोल रहे थे वो छोटा हो गया. तो कभी ये बड़ा है, कभी ये छोटा है. Okay, just what is it? Something like this. Okay? Right. There is a small spoon and there is a big spoon. Now, do you agree? Yeah. This is a small spoon, this is a big spoon, right? Now, I have got another spoon here. So now which is the small spoon? The blue one. This is the small spoon and now this small spoon has become the big spoon. Big spoon, right. Okay, and this big spoon, this very big spoon, what about it now? Now this big spoon has Okay, become there's a small. bigger spoon now. Yeah. So this has become the smaller spoon now. Yeah. Okay, so children are very, very confused about numbers in this sense. That sometimes the same thing is called big, sometimes it is called small, just what is going on. Right. Okay, so they're looking for some meaning in a very confused number world. Right? They're hearing numbers all the time, but they're confused about it. Right. Trying to find some meaning in it. Another thing I want to tell you right now, which will make learning for mentally handicapped children, learning of maths especially, easier, is that it has to have practical relevance. All the maths must have practical relevance. Means they should be generalized. Whatever they're doing, it should make sense Okay. to them and it should be practically relevant to them. Okay. Like, you know, young children, they learn maths because it is practically relevant to them. They learn about time, not because they want to learn about time and okay, well, they are 6-7 years and they should learn about time. No. How do they learn about time? Papa कितने बजे आएंगे? Right. They'll keep asking the mother, पापा कब आएंगे? पापा अभी नहीं आए. So the mother will say, okay, घड़ी की ये वाली सुई जब इधर से इधर आ जाएगी तब पापा आएंगे, वेट करो. After 5 minutes they'll come and say, अभी तो नहीं आई सुई, पापा कब आएंगे? So quickly they start learning to see the watch. They can read the clock. Right. Why? Because it is practically relevant to them. They like the time when Papa comes. He brings something for them. He gives them a hug. He takes them out sometimes. Okay, Mummy makes some nice nashta when Papa comes. Right. Okay, so it is practically relevant for them to know the time when Papa comes. So they learn about time in that sense. Like if you serve cold drinks to children. Okay, a very small child, very small, say about 2.5 to 3 years old, okay? If there are 2 glasses of cold drinks, one with half a glass full and one with very little cold drink in that, which one do you think he will pick up? The one which is having a larger amount. More. More, No, yeah. he doesn't know more and less in numbers. Okay, he doesn't know by volume, by weight, by thing. He has no idea of all this right now. But it is practically relevant for him to have the bigger one. Right. He will get more of what he likes to have. And when he is having milk, which glass do you think he will pick up?
In between the milk and the cold drink? No, say there are 2 glasses of milk. One has half a glass of milk and one has a full glass of milk. Half a glass of milk. Half a glass of milk because he does not like milk. Right. So it has to be practically relevant to him. He has to enjoy that maths. Right? So they start learning maths very well because it's practically relevant. So for our handicapped children, it has to be practically relevant. Right. They will also learn faster if it's practically relevant, right? And it will stay with them. When they learn it, it will stay with them. Okay. The use of concrete is most important in developing of maths concepts. Now, what does this mean? The use of concrete? The use of concrete basically means that they should be allowed to handle a lot of material. Okay, like when they are counting, they can be counting with coins 1, 2, 3, 4, whatever. But it has to be concrete things. It has to be things that they can touch and do. Okay, concrete means tangible things, something that they can touch. Like even if it's simple counting, they can use spoons for counting. Okay, 1, 2, 3, 4, whatever. Okay, but it has to be concrete, something that they can touch and feel and count. Okay. So the use of concrete is going to be very, very important in developing of maths concepts. Now I'll give you a bit of an example on this again. Suppose I'm looking at you and I think, oh, Kriti is wearing a very nice dress. But what is the material like? I can't make out. So what do? You just touch it. Okay. What did you say? You just touch it. I just touch it. So I touch it and once I feel it in concrete, now I'm sure what she's wearing. Okay. Right. So whenever I'm confused, okay, even I at my age and stage, okay, after all the experience in maths, will go back to concrete. Right. Whenever I'm confused, I will learn better when I touch and feel and then learn. Okay, it will stay with me, that learning, right? Right. And also it's like a crutch. Like if say suppose children are counting with matchsticks, suppose. Okay, a lot of counting they're doing with matchsticks. Now we try to stop them from doing it. We tell them, no, don't use matchsticks, don't use spoons. Count in your head. Only count in your head. The child is not going to be able to do it at that stage. If he is using things to touch and count, if he is using things to count, he's going to touch it, he's going to feel surer about it. Let him do it. It's like a crutch. जैसे बैसाखी होती है ना, Right. कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है जैसे, तो कुछ टाइम के लिए उनको बैसाखी यूज करना पड़ेगा, है ना? लेकिन जब वो घर के अंदर होंगे, वो टाइम में वो बैसाखी नहीं यूज करेंगे. हाँ, करते हैं ज्यादातर लोग घर के अंदर नहीं यूज करते हैं बैसाखी. क्यों नहीं यूज करते हैं? Because they're safer in home. या दे आर सेफर. और घर में फर्नीचर है चारों तरफ, वो कभी कुर्सी पकड़ लेंगे, कभी टेबल पकड़ लेंगे, पलंग पकड़ लेंगे, कोई ठीक है वॉल कैबिनेट है उसको पकड़ लेंगे, कोई दरवाजे का हैंडल पकड़ के. घर में वो ज्यादातर उसको यूज नहीं करेंगे. अब वो कुछ टाइम के बाद में बैसाखी छोड़ भी देंगे, लेकिन जब उनको बैसाखी की बहुत जरूरत है, जिस टाइम में उनको चलने में बाहर बहुत मुश्किल आ रही है, बाहर है मुश्किल आ रही है, आप उनके पीछे पड़े हो कि तुम बैसाखी छोड़ दो, बैसाखी से नहीं चलना है, अच्छा नहीं लगता है, बैसाखी को नहीं लेना है, बस चल सकेंगे क्या? नहीं चल सकेंगे. यूज ऑफ कंक्रीट इज लाइक अ क्रच, बैसाखी की तरह. जब उनको इसकी जरूरत नहीं होगी, खुद से ही छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं छुएंगे. अभी आप काउंटिंग कर रहे हो, आपको कोई छोटा सा सम में बोलूंगी काउंट करने को, 10 + 4 14. कैसे कर लिया आपने? तो कंक्रीट को छुआ भी नहीं. Because मैंने सीखा हुआ है. सीखा हुआ है. आपने इतनी बारी कंक्रीट से करा हुआ है. एज अ चाइल्ड यू डोंट इवन रिमेम्बर नाउ दैट इट हैज गॉट फिक्स्ड. द कॉन्सेप्ट इज फिक्स्ड and now you don't need it. Okay, so young children will also learn in the same way.
Mentally handicapped children will most certainly learn in this way. But with special methods, we have to devise for them. For some things you have to devise special methods, otherwise what you need to do is you just need to simplify the tasks for them. You need to understand at every level. We'll be talking more about this when we talk about the teacher's role in the learning of maths. But yeah, you have to, you don't, you know, for counting, like you don't need to have special gadgets for them for counting. You don't need any special equipment for counting. You need things that they can handle. Now maybe they cannot handle these small buttons and all, you know, maybe sometimes they can't handle very fine things for, you know, because of fine motor problems that they might have, right? They can't handle some of small stuff like that. So you can give them bigger stuff like this. Okay, you can give them bigger things like these coins, or you can give them some nice things like these to count with, you know, some blocks they can use for counting, and you can use these things. So you really don't have to go and get very specialized kind of equipment. You just have to know that the equipment that you have, what is the best equipment that can be used for them in this. Now we were talking a lot about concrete right now. That is the first stage of learning, concrete, working with concrete, touching, feeling, doing. Okay, that is all concrete. The next stage that children come on to is paper stage. Okay, which will be pictures. They start learning from pictures after that. And then they will go on to abstract work. Okay, symbols and abstract work. But do mentally retarded children acquire this abstract stage? Yeah, they will, depending on what level the child is. How much of a handicap is really coming in the way. See, what we have to try to ensure all the time is that the child has some disability, child has some lags in his learning for various reasons. Okay, behavior also may be one of them that's coming in the way, like we talked about. But what we have to ensure is that we give them the right environment to learn. And we ourselves know that at what stage this child is, so that we can take him to the next stage of learning. If you are doing things with a child that he just cannot follow, it's too difficult for him. Okay, he's not going to be able to learn that. No matter 5 years, 10 years down the line, he's not going to learn it. Okay. So we ourselves as teachers have to know the stages of learning and at which stage this particular child is, so that he can learn. Okay, and from one stage he will most certainly go to the next stage, but there has to be a lot of practice. Now practice कितना होना चाहिए उसका ऐसा numbers नहीं है कि आप 2000 times अगर करवा दोगे तब आ जाएगा, या 5000 times कराओगे, या ऐसा कुछ नहीं है. Nothing like that. You have to give the right material, the right instructions, see that he is ready for this stage, and then let him just be at that stage with those things and let him learn. Give him lots of opportunities to learn that. Facilitate it for him. Be a facilitator only. Okay. So, is there any periodic assessments or quarterly evaluations of the skills? Like if we have taught something number concept to the child, so we'll do something periodic evaluations to find out to what level the child has reached. Yeah, most certainly. Most certainly. There are tests available, and also when, as a teacher, you're doing a functional assessment all the time actually. All the time. If I'm teaching numbers to say I'm teaching the number concept to a young mentally handicapped child. So in my teaching session also I'm doing an assessment. Because I get to know just at what level he is, whether my work has been geared at the right level or no. Okay, so there's an ongoing assessment that goes on, and then you can have periodic assessments definitely. Okay, now what I want to tell you today is, I've been talking a lot about stages actually, that all children pass through the same stages. All children, now mark every word in this sentence, all children pass through the same stages
even though they think and reason differently. Okay. So all mentally handicapped children in their learning of maths are going to pass through the same stages. Okay, the stages are not going to be different. They will definitely be doing some things first, which will lead them on to the next thing, which will lead them on to the next thing. You know, it's like climbing a flight of stairs. Right. Every single person will have to go through all those stairs to reach the top. But some, like, they reach themselves, while Yeah. others have to be provided certain help. Certain help, some might need a railing, Right. some might need somebody else to catch on to, some might take longer to climb, some will linger on at one step, at the second step, at the third step, maybe at the fourth step they will sit down for some time. Right. Okay, but they will all have to go through the same stages to learn. Is that clear? Yeah. Okay. Another thing I want to tell you is that all the children have a lot of pre-maths experiences long before formal maths. Formal maths से मतलब है कि classroom maths के पहले, you know, उनको already बहुत सारा experience हो रहा है maths का. कैसे? अगर नॉर्मल चिल्ड्रन की बात करें तो जैसे किंडरगार्टन लेवल पे जाते हैं Right. तो डिफरेंट टॉयज के साथ खेलते हैं. Right. फिर क्लासरूम में एक्टिविटीज जैसे ईटिंग एक्टिविटीज होती हैं. बिस्किट्स किसी को 2 मिले, किसी को 3-4 मिले. ओके, सो नंबर्स उसमें आ रहा है, क्वांटिटीज आ रही है. ओके, या प्ले एक्टिविटीज हो गई. अगर हमने 2 के ग्रुप बना दिए या 3 के Yeah. ग्रुप बना दिए, इन दैट केस आल्सो ओके, पेंसिल्स, रबर, शार्पनर्स हो गया. राइट, राइट. तो इन दैट केस Okay, the size of big pencils, small pencils, okay, and then colors, like you said, you know, they're learning a lot about colors, they're learning a lot about shapes. No, I was just looking at things at home, and this was really very interesting in this sense. It's very, very simple things that we can get all around us. Right. And there's so very many colors. Even जो मम्मी की बिंदी जो घर में उनको दिखाई देती है, you know, children, all the bindis, just a collection of some of the things. They are all different shapes here. Okay, see, there are some long ones here, and there are some oval shaped ones here, and there are some round ones here, and there are some small round ones here. Okay, and there are some bigger round ones here. राइट. Right. There are many of them in this. Okay, and there are not so many in this one. Okay, so even a simple thing like an almirah, okay, just opening the dressing table, okay, exposes them to so much maths, राइट. right? Even before they've gone on to any classroom or anywhere. Huh? So they're already learning about shape, size, color, right here. राइट. Okay, they learn a lot about weights and measures also. अरे तुम इतना भारी हो, तुमको अब मैं नहीं उठा सकती. ओके, तुमको उठा के सीढ़ी नहीं चढ़ सकती. Right. अब तुम बहुत भारी हो. या ये बैग मैं नहीं उठा सकती. उसको बुलाओ, मेट को बुलाओ उठाने के लिए, ये बैग बहुत भारी है. हाँ? नहीं बेटा, ये ग्लास तुम कैसे उठाओगे, ये तो बहुत भारी है. राइट. हाँ? अच्छा लो, तुम हल्का वाला उठा लो, मुझे भारी वाला दे दो. ओके, थिंग्स लाइक दैट. इतने लंबे हो गए हो, अब कैसे गोदी में उठाऊं. राइट. ओके, अरे इतने बड़े हो, इस कुर्सी पे कैसे बैठोगे, फिट नहीं आओगे. ओके, सो दे just hearing about maths all the time, long before formal maths is being taught, right? About time, about money, like we said earlier, you know, सस्ता है, महंगा है, पापा किस टाइम आएंगे. So much of time they're listening to the words around maths. Huh? It's called a maths vocabulary actually. It's a full maths vocabulary that they learn before they actually get into formal maths. Rightly said. In the meantime, I would like to say our viewers can call us for any queries. हमारा टोल फ्री नंबर है 1800111208. हमारा स्टूडियो नंबर है 265111613. हमारा फैक्स नंबर है 265111609. तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मैम और हमें प्री मैथ स्किल्स के बारे में क्या बता रहे हैं. Okay, now for very young children, now this is going to be very relevant for mentally handicapped children also.
The visual impact is very important in the early stages. So young children's stuff that you see mostly is nice and colorful. तो आपको कभी याद है कि आपने ब्राउन और ग्रे टॉयज देखे हो बच्चों के? नहीं देखे? कभी नहीं देखे? No, actually they don't attract children. They don't attract children. Yeah. These are nice attractive things that Yeah. children can play with. So most of their toys are nice and attractive. The material that they have, the counting blocks and all that, they're all very attractive. The beakers, seriation rings, all of them that we very commonly use are all very colorfully done up. Children like that. So does color is also a part of maths concept? Well, color strictly no, but in differentiating, yes, so that the child learns to see differences closely, you know, between blues and greens and say yellow and red and all. So he has to have a lot of discrimination skills, because आगे चल के numbers को कैसे पहचानेगा नहीं तो अगर discrimination की skills नहीं होंगी तो this will come a little more in reading actually. Okay, when he has to, but then maths and reading will also go side by side, right? Reading numbers, writing numbers, they'll all go side by side. In that sense, yes. Okay. Now, children are fond of straight lines and forms. Have you seen, you know, I have seen a 1.5-year-old child who जितना घर में जूते हैं ना वो सारे जूतों को लेके एक लाइन बना देते हैं लंबी सी, Right. ठीक है, निकाल के अलमारी में से, और थोड़े बड़े हो जाते हैं तो जो चेयर है वो सारी डाइनिंग चेयर्स को लेके एक लाइन बना देते हैं सारी, और उसको ट्रेन की तरह चलाने की कोशिश करते हैं. कभी आप देखोगे सारी कटोरियों की लाइन लग गई, कभी प्लेट्स की लाइन लग गई, हाँ, things like that. So they like lines and forms. They like straight lines. They like things like that. So the material has to have nice lines and forms. Even autistic children have found to be persisting the same behavior, like compulsive behavior. They arrange the toys in a same sequence, in a line sequence. Yeah, but right now we are not talking about compulsive behavior also. Okay, but what you said is absolutely true, because at that they may be stuck at that stage of learning, so they are doing it right there, like all young children will be doing, like mentally handicapped children will also be doing when they are at that stage. So allow them to do it. अगर नॉर्मल बच्चा 1.5 साल का बच्चा लाइन बनाता है जूतों की, और मेंटली हैंडीकैप्ड अगर 5 साल का 6 साल का बच्चा लाइन बना रहा है जूतों से, वो बनाने दो, लेट हिम. ही इज एट 1.5 years of cognitive learning. He is only performing. He is performing at that level. So he is going to learn things from that level onwards. You know, only because the child is 5 and looks big in size doesn't mean that he can't do things that 1.5-year-old children are doing. If mentally he's at that stage, at a lower stage, which he will in all probability be at a lower stage, okay, that's just where the issue of mental handicap comes in, right? So allow him to do it, let him do it. If he likes to play with nice bright little toys, let him do it, because he's at that stage of learning. And as we said, the visual impact is very important in the early stages. You've seen them making a train with matchsticks and things like that. Yeah. Okay. Even I do the same. Oh, you still do it? No. You have done it Yeah, as a child. I done it, Okay. We've all done it actually. Yeah. But the interesting thing is that is how we have learnt. You know, we have actually forgotten how we have learnt. Right. We have gone, all of us have gone through those stages. So our children have to be allowed to go through all those stages. Children learn similarities with more difficulty. Same things are difficult for them to learn. Like if I'm teaching a child about size, okay? When I'm teaching a child about size, then if I present these two things together, right? They're somewhat similar. Right? The size is somewhat similar. So this is going to be more difficult for the child to learn. बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, ठीक है? But when I present two totally different things, different sizes, a big contrast in the sizes, right? Now this becomes easier to learn. Right. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये बहुत ज़्यादा छोटा है इससे comparison में, हाँ?
Similarities are more difficult to learn. Dissimilarities are easier to learn. So when you're presenting material, see that you're presenting dissimilar material. Okay. It will be easier to learn. छोटा बड़ा सिखा रहे हो, लंबा छोटा सिखा रहे हो, हल्का भारी सिखा रहे हो, तो teach it with material that is starkly different. Okay, very vividly different. एकदम contrast है, एकदम पता लगता है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, एकदम पता लगता है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है. आसपास का जब सीख जाएगा अच्छे से, उसके बाद में आसपास का कराना. ओके, लेसर डिफरेंसेस व्हेन ही इज लर्नड इट. तो मैम लाइक इसका कोई ऑर्डर भी होता है कि हमें कब फॉर्म सिखाना है, या कैटेगरी या साइज शेप, इसका कोई ऑर्डर भी होता है? सी इनफॉर्मली तो आप सारी चीज, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आप शुरू से बताते जा रहे हो, एंड द चाइल्ड इज जस्ट इन दैट एनवायरनमेंट, ही इज जस्ट पिकिंग इट अप. Okay, otherwise formally it will be taught. There is a sequence to it, definitely a sequence to it. Things have to be taught with concrete first, then on paper, then in abstract. Okay, they will go like that. Initially you will teach the 3-piece form board, then you will go on to a 5-piece form board and to more shapes later, and then it's little difference in shapes later. In the beginning there will be stark differences. Okay, so there definitely are stages in learning. Okay, and like we said, all children will go through the same stages. Now negatives are difficult for children to learn. They don't like negatives. They don't like the word nahi. Nahi unko nahi pasand hai. They just don't like it. They like positives. भरा है. और ज़्यादा डालते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो, don't like it. Okay. So keep that in mind. When you're trying to teach children, especially mentally handicapped children, we need to keep this in mind. Okay. And they love to exaggerate. Children love to exaggerate. कल मैंने एक हाथी देखा. वो इतना बड़ा था, उतना बड़ा, मुंह भी खोल रहा है, हाथ भी उतने बड़े जा रहे हैं. They are running from one side of the room to the other side to tell you how big the हाथी was. They love to exaggerate. या एक कुछ देखा उसने, इतना छोटा सा, इतना छोटा. So they love to exaggerate. They love to dramatize things, मजा आता है. That is how they, वो वैसे ही आंखें एकदम बड़ी बड़ी होने लगती हैं. But that is how they learn. And that is how it sticks with them. They'll know it forever after that. Right. Okay, now there's something interesting here. We had said earlier that the child's number world is full of confusions and chaos. Okay. He's looking for meaning in a confused number world. We were talking about that? Yeah. Okay. Now I've just got a few examples here. And like say something like this. Okay. So there was a teacher. And she was teaching her children numbers. Okay, so 1, 2, 3. Counting was being taught. Okay, so she said 1, 2, and 3. So what is this? 1, 2, and 3. 1, 2, 3. The whole class was repeating with her. 1, 2, and 3. Then what she did? She removed one of the things. And she said, okay, now tell me what's left. And what did most children say? 1 and 3. Okay. Were left. Because she was using this in this way, like we said, 1, 2, and 3. And the children thought that this was the name of that block. Okay. Okay, 1, 2, and 3. So when 2 went away, 1 and 3 were left. So children are confused about numbers. Okay, sometimes they think these are names for things. Okay. So you need to have a lot of variety. Right? If you do it only with 1 or 2 kinds of materials all the time, they start thinking कि ये तो उसका नाम है. Right. Right? They have to generalize. That numberness has to be generalized. Okay. Another thing we very often found in families is that
there is an elder brother, there is a younger brother or younger sister or whatever, झगड़ा हो गया बच्चों का, and एक ने दूसरे को धब धब करके पीट पाट दिया. Okay, so the child रोते रोते मम्मी के पास गया कि उसने मुझको मार दिया है. कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, तुम बड़े हो ना, वो छोटा है, उसने मार दिया तो कोई बात नहीं. ओके ओके, चुप हो गए उस टाइम. कुछ दिन बाद बड़े भाई से झगड़ा हो गया. ओके, उसने आके पीट पाट दिया, लड़ाई हो गई. फिर गए मम्मी के पास, अरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो अरे वो बड़ा है, तुम छोटे हो, whatever, like you know. So the child is very confused now. He tells the mother, मुझे अभी पहले बताओ कि मैं बड़ा हूँ कि छोटा हूँ. क्योंकि what they don't understand, young children don't understand is कि numbers are relative. Absolute में नहीं होते हैं कभी कभी. Like quantities are relative. Sorry, not numbers. Quantities are relative. You know, like we said, एक चीज किसी से बड़ी हो सकती है, किसी से छोटी हो सकती है वही चीज. So वो जो भाई है वो किसी से बड़ा है तो वो पिट जाता है, किसी से छोटा है तो वो पिट जाता है. Okay, so he is confused कि मैं बड़ा हूँ कि छोटा हूँ. Tell me. Another thing is about first. What does first mean to you? When I say first, Number okay, or moving ahead, like in the other senses, Okay. topper in class or first position, securing first position. okay, securing first position. Okay. Now there was this little child. She was in her class, and at home she was always being told कि जल्दी से दूध पी जाओ, तुम फर्स्ट आ जाओगी, भैया से जल्दी तुम पी लो, तुम फर्स्ट आ जाओगी. एंड इन स्कूल जल्दी भाग के जाओ, फर्स्ट आ जाओगी. स्कूल में रेस हो रही है तो जल्दी करो, यू नो तुमको फर्स्ट आना है, फर्स्ट आओगे तो प्राइज मिलेगा. So she has this little exam. She's in nursery. She has this exam going on. कुछ written work का था. And the teacher sitting there. And इनको paper अभी मिला. And within 2 minutes, you know, she was running and going to the teacher कि मेरा paper ले लो. So the teacher said नहीं तुम ये तो complete नहीं है कहीं से भी, तुम अभी जाके इसको complete करो. She said नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं खड़ी रहूंगी. So the teacher said no, but you have to go and complete your paper. So she started crying and she said फिर मैं first कैसे आऊंगी. Because for her first आने का मतलब था कि जो सबसे पहले भाग के टीचर के डेस्क पर चला जाएगा वो first आ जाएगा. What did the teacher mean when she said go and do it? Complete the paper. Yeah, And completing the paper, and the one who gets the highest marks will come first is what the teacher was saying. Right. And the child was thinking that since everywhere she was only running and going to come first, so she has to run and reach the place to come first. So there's so much confusion in that. Another one is, you know, two young children talking, and one young child and her sister had come from somewhere. So she said, "Oh, I love you, Meha." So her other cousin was standing there and she said, "I love you too, Meha." Meha was a little baby, a little girl, matlab 2.5, 3 years old. So she looks up at her cousins and she says, "I love you 3." Okay. Says, "I love you too." English wala 2, T-double-O. And so what does Meha do? She's going on in that number world. 2 bola hai to 2 ke baad 3 aayega. So she says, "I love you 3." Right. Okay, so the children are very, very confused. We need to clarify their confusions by verbalizing to them. So I hope you will be having a better understanding with all these good examples. Rest will continue it further after a short break. It's time for a short break.
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैम हमें प्री मैथ स्किल्स के बारे में बता रही थी। जैसा कि हमने सीखा कि मैथ्स का जो बेसिस है सिर्फ काउंटिंग है। काउंटिंग अगर बच्चा सीखेगा देन ऑल्सो ही विल बी एबल टू लर्न ऑल द फर्दर स्किल्स। लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, देन प्रैक्टिकल रेलिवेंस इज ऑल्सो नेसेसरी। हमें कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस ज़्यादा देना चाहिए रादर देन एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंसेस। लेकिन बच्चा प्रोग्रेस ऑन करेगा फ्रॉम कॉन्क्रीट टू पेपर टू एब्स्ट्रैक्ट। फिर डिसिमिलैरिटीज़ जो होती है वो सीखने में ज़्यादा आसानी होती है रादर देन सिमिलैरिटीज़। और अगर हम एग्जैजरेट करके, जैसे नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं, दे लव टू एग्जैजरेट द थिंग्स। लाइक मैम ने एग्जाम्पल दिया, आज मैंने इतना बड़ा हाथी देखा, तो दे लव टू एग्जैजरेट द थिंग्स। Likewise, the color is also, visual impact is also very important, and they also it's very easy to learn lines or form. पहले ज़्यादा easy होता है learn करने से rather than going on to the next further skills. तो हम मैम से पूछने जाएंगे कि और प्री मैथ skills में हम क्या सीखने जा रहे हैं आज. Some things that we must keep in mind is there's a lot of practice is needed to fix concepts. Lots of practice is needed. तो बच्चों को अलाउ करो वो चीज़ बार बार करने के लिए, so that the concepts are permanently fixed. Okay. And another thing to remember is that the practice must follow discovery. जब वो आपको लगता है कि जब बस एडिशन सीखने लग रहा है तब तो आप जल्दी से सब्ट्रैक्शन पे चले जाते हो, लेकिन उसको तो वो टाइम है जब बहुत ज़्यादा एडिशन करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो डिस्कवर उसने कुछ किया है एडिशन के बारे में। अब उसको अगर ये कॉन्सेप्ट को फिक्स रखना है फॉर लाइफ, ही हैज़ टू रिमेंबर एंड नो इट, ही जस्ट नीड्स टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ इट। जैसे एंड ही हैज़ टू डिस्कवर इट हिमसेल्फ, द चाइल्ड हैज़ टू डिस्कवर इट हिमसेल्फ। आप उसके लिए ये डिस्कवरी नहीं कर सकते हो। जैसे कि बाइक चलाना है, साइकिल चलाना है, जैसे ठीक है, बच्चा ने चलाना शुरू किया, एक साइड कभी जब एक तरफ राइट को गिरता था तो लेफ्ट की तरफ साइकिल ले जाता था, लेफ्ट को गिरता था राइट की तरफ ले जाता था, फिर भी डगमग करके बहुत गिरा, चोट लगी, फिर भी करके करके साइकिल थोड़ी बहुत चलाना सीख गया। अब आप सोचो कि उसने जैसे ही ये रूल डिस्कवर किया कि मैं एक साइड गिरता हूं तो मुझे दूसरी साइड कर लेना होता है, और अगर मैं लेफ्ट साइड गिर रहा हूं तो मुझको राइट साइड पे कर लेना है साइकिल को। अब जैसे ही उसने ये डिस्कवर किया रूल, आप उससे साइकिल हटा दो, बोलो अब तो तुम सीख गए साइकिल चलाना, तो नहीं सीखा है ना अभी वो। उसको क्या चाहिए? उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। अब वो क्या करेगा, कुछ दिन खाने पीने किसी चीज में ध्यान नहीं है उसका, वो सिर्फ साइकिल चलाएगा, और वो साइकिल को मास्टर कर लेगा, इतना मास्टर कर लेगा कि अगर वो 30 इयर्स के बाद, 30 साल के बाद भी साइकिल उठाएगा तब भी वो साइकिल चला लेगा। इतना वो कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में फिक्स हो गया है कि साइकिल को कैसे चलाना है, बिकॉज ही हैज डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड ही हैज डिस्कवर्ड इट हिमसेल्फ. Nobody discovered it for him. He has to do his own discoveries. Mentally handicapped children also have to do their own discoveries. They have to learn it themselves because they are mentally handicapped. It doesn't mean that you are going to discover it for them. They will have to do it. Right. Most children will try new approaches to learning, and they will convert difficult problems into simple problems. One thing we need to keep in mind is that they all have individual likes and dislikes. All of them have individual likes. Some children like to learn with eatables. Okay. Some children like to learn with buttons. Some children like to learn with cars. Some children like to learn with dolls. Okay, so all children have their own likes and dislikes in that sense, right? And there is a gender difference all the time. Girls like to learn with certain things, boys like to learn with certain things. Then there may be different rate of learning when they are learning individually or in a group. Some children may be much better in group learning. They can relate better in a group. They like that little competitive edge that they have. And there are other children who need only individual sessions and will learn best in individual sessions. So we as teachers have to know that, और ये इस बात को constantly आपको ध्यान में रखना होता है, not only in maths, in anything else that you may be teaching them. So there may be gender differences, individual differences towards particular things, or there may be individual and group learning. जैसे अगर लड़कियां हैं
तो दे विल बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स सर्टन थिंग्स लाइक डॉल्स के साथ ज़्यादा लर्निंग पसंद करेंगे, या बॉयज़ जो हैं कार्स के साथ ज़्यादा लर्निंग पसंद करेंगे, कुछ बच्चे ईटेबल्स के साथ ज़्यादा लर्निंग पसंद करते हैं, या फिर इंडिविजुअल और ग्रुप लर्निंग का भी रेट ऑफ लर्निंग पे इफेक्ट पड़ता है। कई बच्चे जो होते हैं अगर हम उन्हें इंडिविजुअल सिचुएशन देते हैं तो तब ज़्यादा लर्निंग रेट ऑफ लर्निंग ज़्यादा होता है, या फिर ग्रुप लर्निंग में कभी कभार रेट ऑफ लर्निंग ज़्यादा होता है। तो जब तक एक पर्टिकुलर स्किल जो हम बच्चे को सिखा रहे हैं अगर उस पर मास्टरी अचीव नहीं होती तब तक हम नेक्स्ट स्किल पे प्रोग्रेस नहीं करेंगे, और साथ ही साथ हम बच्चे को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे कि वो अपने आप डिस्कवर करके उस स्किल्स को और एनहांस करे। आगे बढ़ते देखते हैं मैम और क्या बताएंगे हमें प्री मैथ स्किल्स के बारे में। Now we'll be talking about number work and number concepts, okay, for young children. Before counting properly, there are many things to understand. Pre-maths concepts are vital to learning, and they are vital to understanding of number concepts. Pre-maths concepts, मतलब जो फुल फॉर्मल मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं उनके पहले के जो कॉन्सेप्ट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नंबर कॉन्सेप्ट्स, राइट? एंड चिल्ड्रन हैव एन आइडिया ऑफ नंबर्स एंड प्री मैथ्स वोकैबुलरी लॉन्ग बिफोर दे हैव एक्चुअली लर्नड numbers. We've already worked around that, okay? So to understand the number concept there are many things that they need to know. The first thing that they need to know is that numbers have to be learnt in a rote like rhyme. एक गाने की तरह, एक रटे हुए पोएम की तरह उनको नंबर्स आने ही होंगे, कैसे भी आए, 1 2 3 4 5 6 करके आए, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कर कर आए, कैसे भी आए, बट उनको ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है ये एक रटे रटाए तरीके में आना ही पड़ेगा। गाने की तरह सीख सकते हैं उसको, पोएम की तरह सीख सकते हैं, बट दे हैव टू, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट दे हैव टू लर्न। तो मैम जैसे रोट लाइक रैम है, इज इट नेसेसरी कि 1 रोट लाइक रैम अगर वो कर रहा है तो 1 के बाद 2 आना, 2 के बाद 3 आना, ऐसे भी सकते हैं 1 3 4 8 9 10? अगर 1 3 4 होगा तो तुम काउंट कैसे करोगी? तुम काउंटिंग कैसे सीखोगे? ओके अगर जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल ये दूं, अगर मैं आपको ये काउंट करने के लिए बोलूं सपोज, तो आप कैसे काउंट करोगे इसको? 1 2 3। तो फिर आप 1 3 5 क्यों नहीं बोले? बट मैम ये तो मीनिंगफुल काउंटिंग हो गया। हाँ, अगर बच्चा रोट लाइक काउंटिंग सीख रहा है तब भी हमें सिमिलर प्रोग्रेस। रोट लाइक काउंटिंग क्यों सीख रहा है? रोट लाइक काउंटिंग इसीलिए सीख रहा है जिससे कि वो आगे मीनिंगफुल काउंटिंग कर पाए, ओके, उसी के लिए सीख रहा है। Basically, we are only making the counting interesting for him. We are only making the rote counting interesting. तो उसको किसी पोएम के फॉर्म में सिखा देते हैं। पोएम्स लाइक धोबी आया कपड़े लाया, गिन लो जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके कुछ राइम में बना देते हैं जिससे कि वो नंबर्स को सीख जाए अच्छे से। पोएम के फॉर्म में बच्चे जल्दी सीखते हैं ना, गाना और पोएम जल्दी सीखते हैं, so they will learn the rhymes also quickly, okay? But once they have learnt the rote, okay, it does not guarantee an understanding of numbers. मतलब अगर उनको रटा हुआ गिनती उन्होंने सीख ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नंबर के बारे में सब कुछ जान गए। It is no guarantee. ठीक है, रटा हुआ एज अ पोएम सीख लिया था, that doesn't mean कि उसको काउंटिंग भी सही से आ गई है, बट वो पहली चीज है जो उसको करना है। काउंटिंग सीखने के लिए रोट लाइक राइम फर्स्ट है, फिर उसको आना चाहिए हाउ टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स वन एट अ टाइम, ओके? नाउ देयर आर मेनी थिंग्स हियर, लाइक सपोज द चाइल्ड इज लर्निंग टू काउंट, ओके? नाउ दे हैव टू लर्न that they have to separate. Suppose I ask the child to count all this, they have to learn and they have to be able to shift one thing at a time. Okay, like they have to be able to separate things one at a time, one at a time, okay? And not like this that they put one here and then they put these and then, no, they have to be able to do it one at a time, okay, for them to be able to learn counting properly. Now these are prerequisites of counting. Actually this is prerequisite of number work. Number concept के पहले क्या क्या चीज पक्के से आने चाहिए वो ये है, ठीक है? क्या आना चाहिए सबसे पहले? रोट काउंटिंग आनी चाहिए, लेकिन वो कोई गारंटी नहीं है कि भाई तुमको काउंटिंग आई गई है, ठीक है? और क्या आना चाहिए? दे हैव टू बी एबल टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स वन एट अ टाइम, देन दे हैव टू नो
that they don't count anything more than once. कोई भी चीज को एक बारी से ज्यादा नहीं गिनना है जब उनको गिनने के लिए बोला गया है. And they have to remember that they have to count everything. अगर एक सेट के कुछ चीजें काउंट करनी है तो उसकी सारी चीजें काउंट करनी पड़ेंगी. कोई चीज को छोड़ नहीं सकते हो और कोई चीज को दोबारा भी नहीं काउंट कर सकते हो और एक एक को अलग अलग भी करना पड़ेगा और रोट काउंटिंग भी आनी चाहिए जैसे 1 2 3 4 भी ठीक से बोल सको. ठीक है. और उनको 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी आनी चाहिए. मतलब जैसे अगर आप बोलो कि ये 3 स्पून्स हैं, इन 3 स्पून्स में सब में एक एक बटन डाल दो. ठीक है. तो उनको ये आना चाहिए कि एक स्पून में एक बटन ही जाना है. दिस 1-to-1 correspondence is what children need to know before they can count formally and properly. Okay. So this 1-to-1 correspondence मैचिंग में अप्लाई होता है. अगर हमने 3 नंबर लिखा and he has to match the 3 objects drawn at a particular column. Yeah, that is true, but that will come at a later stage. Okay. Okay, that will come at the paper and abstract stage. Okay. Right? Just now in concrete. First everything is in concrete. Okay. Right? So first in concrete they have to know and later they will know with symbols and pictures. Okay? So there are certain prerequisites before learning the proper maths. There are certain prerequisites to learn pre-math skills. Like first, पहले बच्चा रोट लाइक राइम करेगा जैसे 1 2 3 4 5 6. उसके बाद बच्चा आगे बढ़ेगा. जैसे बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं. 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हो गया जैसे मैम ने अभी बताया. तो आगे बढ़ते हम देखते हैं हम और क्या सीखेंगे. Also children will learn that the order of counting is not important. मतलब आपने किस क्रम में वो गिनती करी चीजों की वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है. आप ऐसे अगर चीजें रखी हुई हैं, सपोज मैं बार बार यही एग्जांपल ले रही हूँ, ये हैंडी है दिखाने के लिए कि अगर हमको ये चीजें गिननी है तो मैंने इसको पहले गिना या इसको पहले गिना, डजंट मैटर. ओके, एज लॉन्ग एज कि मैंने सारे गिने, सबको एक चीज को एक बार ही गिना. ओके और सबको एक एक करके सेपरेट किया. मैंने पहले इस वाले को गिन लिया या पहले इसको गिना, दैट डजंट मैटर. द ऑर्डर ऑफ काउंटिंग is not important. In which order I have counted, the things are not important as long as all of them are counted. Okay. Okay. And one object in one set is the same as one object in another set. Suppose जैसे ये है, ये एक सेट ये है और सपोज एक सेट ये है. ठीक है, चीजों का. हाँ, एक सेट ये है, ये कुछ कॉइन्स हैं यहाँ पे और ये इधर कुछ स्पून्स रखे हुए हैं. सो वन में चाहे ये हो और चाहे ये हो, इट इज द सेम थिंग. चाहे इसका वन हो चाहे इसका वन हो, वन इन वन सेट इज द सेम एज वन इन अनदर सेट. Right. Okay? A lot of variety is needed in counting to fix concepts like we talked of earlier. Need to give a lot of material, different kinds of materials. Also children learn something very interesting here. You know, अब जब काउंटिंग करना शुरू किया ना तो अब सब चीज काउंट कर रहे हैं. हाँ, लेकिन अब पानी को तो काउंट कर नहीं सकते. ठीक है, वो लंबा सा कपड़े का थान है उसको तो काउंट कर नहीं सकते. वो तो कंटिन्यूस है. Okay, so they can't count that. So they learn कि everything can't be counted like this. Okay, some things are continuous, some things will be measured. They cannot be counted. Right. Okay. Now this is the routine that children will follow. They will learn rote first. पहले रटा हुआ सीखेंगे, फिर कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर एब्स्ट्रैक्ट पर जाएंगे और सिंबल पर जाएंगे. समटाइम्स ये एब्स्ट्रैक्ट और सिंबल जो है ये बच्चे आगे पीछे कर लेते हैं. वो सिंबल पहले सीख गए, एब्स्ट्रैक्ट में बाद में सीखा. बट रोट एंड कॉन्सेप्ट का तो यही चलेगा, हमेशा यही क्रम चलेगा, यही रूटीन चलेगा. पहले रोट में सीखना पड़ेगा नंबर, फिर नंबर का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, उसके बाद में सिंबल या एब्स्ट्रैक्ट सीख सकते हैं. तो मैम जैसे हमने सीखा था कॉन्क्रीट, पेपर, फिर एब्स्ट्रैक्ट. हाँ. लेकिन यहाँ पे तो पेपर स्टेज फिर मिसिंग नहीं है. पेपर स्टेज यहाँ पे मिसिंग अभी नहीं है क्योंकि ये जो सिंबल है ना ये आ जाएगा जब पेपर स्टेज आएगी. 4 जो है वो क्या होगा, कहीं तो लिखोगे ना 4 को, है ना. जो 4 का जो नंबर है उसको तो दैट विल हैव टू कम ऑन पेपर.
this 4 that you are going to write down, this will have to come on paper. The 4 आप लिखोगे तो पेपर पर ही तो आएगा, ठीक है. तो जब आपने उसको एक रिटन सिंबल दे दिया तो वो पेपर वर्क हो गया, ठीक है. ओके. नाउ द फर्स्ट फ्यू नंबर्स आर आर्बिट्ररी. चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न दिस कि जो पहले के कुछ नंबर्स है ना, उनके लिए कोई रूल्स नहीं है, कोई रूल्स नहीं है. किसी ने कह दिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही होना चाहिए, बस वैसे ही है वो, उसका कोई रूल नहीं है. मतलब वो सेम है, इट विल बी द सेम, बट इट डज नॉट हैव अ रूल. रूल जो है वो 11 से शुरू होता है, 11 से शुरू होता है रूल. 1 1 ओके, 1 2 अब रूल फॉलो हो रहा है. 1 3 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17, ठीक है. 2 1 21, ठीक है. 5 0 50 5 1 51 5 2 52, फिर हंड्रेड्स पे जाके 101 102 103, ये सब रूल्स हैं. लेकिन जो शुरू के जो 9-10 नंबर्स हैं वो आर्बिट्ररी नंबर्स हैं, कोई रूल नहीं है. मैंने कह दिया तो कह दिया, ये नंबर्स ऐसे ही होंगे. okay. That is how they came about, you know. Somewhere somebody said that these numbers are to be like this. Okay, they have to be like that. After that, there are rules, right? The number line is very important in teaching numbers. Children learn the continuity of numbers. 1 2 3 4. They're in continuation. They see numbers in a line. You and I see numbers in a line. Yeah. Yeah, we don't see numbers in isolation. No? We see them either in a vertical line or in a horizontal line. So numbers in a line, number line. Number line needs to be taught. Number line should be put up in all classes. जहाँ पे भी mentally handicapped बच्चा जब numbers सीख रहा है तो वो जहाँ numbers का काम करता है घर में, उस टेबल के पास में या टेबल के ऊपर भी नंबर लाइनिंग बनी होनी चाहिए. उसको आप जमीन पे नंबर लाइन बना के चला सकते हो, नंबर लाइन के साथ काम होना चाहिए. सो दैट दे सी दैट कंटिन्यूटी इन नंबर. कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो को सिखाना बहुत जरूरी होता है कि जीरो बाय इटसेल्फ मीन्स कुछ नहीं, खाली है, कुछ नहीं है. बट जीरो एडेड टू नंबर्स चेंजेस द वैल्यू ऑफ दैट नंबर. ओके, लाइक 1 की वैल्यू चेंज हो जाती है जब जीरो आ जाता है, उसके साथ 10 हो जाता है, और एक और जीरो लग जाता है और वैल्यू चेंज हो जाती है. 100 हो जाता है और एक जीरो लग जाता है और चेंज हो जाती है. बट बाय इटसेल्फ जीरो का कुछ नहीं है, खाली है. Okay, backward counting and playing with numbers is also very important. Now practice to follow discovery, because they get a sense of victory is what we were talking about. We verbalize the number work and what is being done. जब भी numbers का काम हो रहा है बताना होता है, ये हो रहा है, अभी हम 2 और 3 को जमा करेंगे, ठीक है. 2 ब्लॉक्स इधर रखो, 3 ब्लॉक्स इधर रखो, अब इनको हाथ से जमा कर दो. वर्बलाइज करके बात करेंगे, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रहेंगे वर्बलाइज करके. हमने पहले भी कहा था ना, जब कंफ्यूजन होता है तो वर्बलाइज करने से क्लियर हो जाता है, तो वो क्लियर रहेगा. जो बड़े नंबर्स के साथ काम है वो इट इज अ बिग जंप फॉर चिल्ड्रन, इसलिए पहले छोटे नंबर्स के साथ खूब अच्छे से पक्के से काम करा लेना चाहिए. खूब पक्के से काम करा लेना चाहिए टिल विद इन नंबर 9 एंड ऑल, एंड then it is easier to work with bigger numbers after that. Okay, now when we come to written work for children with mental handicap, a 4 square copy is a good thing. आजकल हम लोग कम यूज करते हैं बहुत बड़े, but it is a good thing. एक बड़े बड़े स्क्वायर्स की कॉपी, फिर उसके बाद छोटे स्क्वायर्स की कॉपी. Okay, because written work presents very specific difficulties. Okay. ठीक है, जो नंबर सीखने में जो डिफिकल्टीज नहीं आती है वो फिर रिटन वर्क में आते आते आना शुरू होती है, राइट? तो पहले हमें बड़े स्क्वायर्स देने चाहिए मेंटली हैंडिकैप को, देन प्रोग्रेस ऑन टू द ग्रोस टू फाइन. डिसेबिलिटी का तो रूल ही है ग्रोस टू फाइन, एंड सिंपल टू है ना? कॉम्प्लेक्स. हाँ ना, एवरीथिंग इज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड फ्रॉम ग्रोस टू फाइन, राइट? हाँ जी. सो वी हैव टू डू दैट इन मैथ्स ऑल्सो. ओके, जब फॉर्मल मैथ्स करा रहे हो उस टाइम पे वैसे ही कराएंगे. हाँ जी. ठीक. नाउ अबाउट रिटन नंबर्स, इट इज द सेम एज लर्निंग टू से. जिस तरह उनको बोलने के नंबर्स बोलना सीखना पड़ता है, वैसे ही नंबर्स लिखना भी सीखना पड़ता है. और पहले के कुछ नंबर्स आर्बिट्ररी नंबर्स हैं, मतलब उनके लिए कोई रूल्स नहीं है, वो बस जैसे हैं वैसे हैं,
बस कह दिया, समझ लो कि उसमें वैसे ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद के जो नंबर्स हैं उसमें रूल्स आते हैं। जैसे जब लिखना शुरू करते हैं ना तो 1 to 9 नो रूल्स, देन 1 0 10, 1 1 11, 1 2 12, नाउ द रूल्स हैव स्टार्टेड, ओके। बट द एप्लीकेशन ऑफ दिस रूल्स इज इम्परफेक्ट। ये परफेक्ट एप्लीकेशन नहीं है रूल्स की कि हमेशा ऐसा ही होगा। जैसे व्हेन आई से 42, okay, when I say 42, how would you write 42? आप कैसे लिखोगे? 4 and 2. 4 2 लिखोगे, but 42 तो ऐसे होना चाहिए ना, 42, Yeah. right? So the जो आपने बोला वो सही है. This is not the right way to write 42. But- So the application of rules is imperfect. You know, otherwise this seems to be quite perfect. 42. पहले 40 लिखा है, फिर 2 लिखा है, ठीक तो है 42. Right. Okay, so the way they say the numbers and the way they write the numbers doesn't follow exactly the same rules. Okay, and the understanding in written work lags behind. Written work में थोड़ा प्रॉब्लम आता है. Actually हम सबके साथ है कि हम लोग जितना समझते हैं उतना बोलते नहीं है, जितना बोलते हैं उतना पढ़ते नहीं है, जितना पढ़ते हैं उतना लिखते नहीं है. ठीक है, किसी को भी आप बोलोगे ना एक छोटा सा एप्लीकेशन भी लिखने के लिए, 2 लाइन एप्लीकेशन, वो पास ऑन ही करते रहेंगे, तुम लिख दो, तुम लिख दो. हाँ, Exactly. क्यों? 2 लाइन का तो लिखना है, बट क्योंकि रिटन वर्क से थोड़ा सा जी चुराते हैं, थोड़ा सा मुश्किल लगता है कभी कभी. एडल्ट्स को भी लगता है, फिर बच्चों को तो लगेगा. Right. रिटन वर्क स्पेशली मेंटली हैंडीकैप्ड बच्चों को तो फिर और लगेगा, क्योंकि इसमें तो रूल्स भी परफेक्ट नहीं है. टीचर बोलती 42 है, बट जब वो लिखता 402 है, वो उसको रॉन्ग मार्क कर देती है. ठीक है, तो दे डोंट अंडरस्टैंड दिस, दैट हाउ डज दिस बिकम सो डिफिकल्ट. Now after number concept we go on to place value. It is the most important concept that children are ever going to learn. Most important concept for a long time. Okay. Okay, and this normally starts from class 1 or 2. It starts, it's a posh name. दहाई इकाई होता है हिंदी में, units and tens. Okay, so place value is just a very posh name for something like that. Okay, what does place value mean? It means that the place is going to determine the value. Like for example, in this number here, okay, there's a number written here. What is this number? 79. Okay, now which is the bigger number of the two? 9. 9 is the bigger number of the two. 9 is the bigger number, but अभी वो जिस place में है It's smaller. वो 7 से छोटा है, isn't it? Because what does this 7 mean here? It's tens. Yeah, 70. 7 means 70 actually. Okay, and so 9, which is actually bigger than 7, in this formation it has its value according to the place that it is put into. Okay, so when 9 is put into the units place, it has a smaller value than 7. Maybe it has a smaller value than 2 also. Right. Right? So the place determines the value. Now there are some games that you can have for this, you know. You can have things like, an easier way to teach place concept is get children to write numbers and write the same number in 3 different places. This must be taught to them, you know. This must be taught to them. Something like this. What is this number? 777. Yeah, please say what it means. 777. Yeah, 777 has 3 sevens, but all the 7s mean different things. Right. Okay, what does this 7 mean? It's in units place. So this is only 7. Only 7. What is this 7? This is 70. 70. 70. Right. And what is this? This is 700. Yeah, so see, the number is, the digit is the same, but it means different things in different places. The place determines the value of that digit. That is what place value is about. Right. Okay, a good way to teach it is with matchsticks.
just make bundles of them. Get children to make bundles of them. Make bundles of 10. Play games with them in which they have to exchange. Okay, one bundle for how many open matchsticks will they? Let them make the bundles, break the bundles, open out the bundles themselves, count the matchsticks, put them back in the bundle again. Let mentally handicapped children do all of this, and all other young children also who are being taught this. They learn place value very much faster this way. Okay. Another commonly used game is that things that we play as children. चटनी वाला खेल खेला है अपने cards के साथ? नहीं? Okay. So what it means is that suppose this is one card, then in exchange of this you can get 5 cards. Okay. In exchange of a queen you can get 10 cards. In exchange of a king, maybe you can get even more cards. Okay, things like that. So in any game where a lot of exchange comes in, you should do a lot of those things informally with children, because they are going to learn place value much faster with that. So जो mentally handicapped children होते हैं उनको problem होती है, written difficulties होती हैं, कभी कभी हमें भी रिटर्न डिफ़िकल्टीज होती हैं, छोटे बच्चों को भी लिखने में दे फील बोर्ड, वैसे ही उनके साथ भी होता है. तो उनको कई रूल समझ नहीं आते. जैसे मैम ने अभी हमें एग्जाम्पल दिया था, अगर हम किसी बच्चे को बोले 42 मेंटली हैंडीकैप को, तो ही मे राइट लाइक दिस 40 and 2. सो ही मे बी नॉट बी एबल टू, उसको रूल समझ में नहीं आ रहा है, दैट्स वाई ही इज़ राइटिंग 42. या प्लेस वैल्यू समझने में बच्चे को प्रॉब्लम होती है. जैसे अगर हमने लिखा 79, तो उसको प्रॉब्लम ये समझने में होगी कि 9 यहाँ पे छोटा है 7 से, क्योंकि ये यूनिट्स प्लेस पे आ रहा है और जो 7 है वो टेंस प्लेस पे आ रहा है. तो हमें बच्चे को प्लेस वैल्यू सिखानी पड़ेगी. डिफरेंट तरीके से हम सिखा सकते हैं. जैसे मैम ने भी एग्जांपल दिया था, प्ले कार्ड्स लेके सिखा सकते हैं, हम मैच बॉक्स लेके सिखा सकते हैं. वैसे एक दूसरा एग्जाम्पल है 777. अगर ये एक ही नंबर है लेकिन इनकी वैल्यू प्लेस वैल्यू अलग अलग है. जैसे ये वाला जो 7 है ये खाली 7 है क्योंकि यूनिट्स प्लेस में आ रहा है. अगर हम इस 7 को देखें तो ये टेंस प्लेस में आ रहा है, मीन्स ये 7070 है. और अगर हम इस वाले 7 को देखें तो ये हंड्रेड्स के प्लेस में आ रहा है, मीन्स ये 700 है. तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे को ये रूल सिखाना. जैसे अभी एग्जाम्पल दिए 42 का और डिफरेंट प्लेस वैल्यूज़ का. तो आगे बढ़ते हम देखते हैं. मैम आगे आप क्या बताएंगे? Like we said that we should reinforce place value is to be really learned very very well. बहुत टाइम उस पर लगाना चाहिए सिखाने के लिए. जितने भी आप अच्छे तरीकों से, सिंपल तरीकों से सिखा सकते हो, खेल खेल में सिखा सकते हो, फॉर्मली इनफॉर्मली, सब तरह से आपको प्लेस वैल्यू पे खूब टाइम लगाना चाहिए. क्योंकि प्लेस वैल्यू जो है बहुत आगे तक काम में आती है. और बच्चों की मेजर मिस्टेक्स जो हैं मैथ्स में वो प्लेस वैल्यू सही नहीं जानने की वजह से ही होती हैं. एडिशन सब्ट्रैक्शन की जो आगे उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, मल्टीप्लिकेशन की, वो मोस्ट ऑफ देम आर लिंक्ड टू प्लेस वैल्यू कॉन्सेप्ट्स व्हिच दे हैव नॉट लर्नड वेरी वेल. Okay, and like the rule that we followed earlier, we talked about it, that once they have discovered, they need to practice to fix the concepts. प्लेस वैल्यू में बहुत important है कि किया जाए. A few things that I just would like to mention is that kids, छोटे बच्चों को एडिशन बहुत अच्छा लगता है. They enjoy addition. उनको subtraction उतना अच्छा नहीं लगता है. उनको समझ में आने लगता है कि मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो ऐड बार बार करोगे, उससे जल्दी है कि मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन काम आसान कर देता है उनका. ठीक है, टेबल्स पहाड़े जब सीखने लगते हैं तो जब उसको यूज में लाने लगते हैं तो उनका एडिशन का काम आसान हो गया है, एक्साइटिंग हो गया है अब उनके लिए. उसी तरह से डिविजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज व्हाट दे लर्न. एंड सिंबल्स आर ऑर्डर्स. सिंबल्स आर ऑर्डर्स का मतलब है कि जैसे ये सिंबल है, यहाँ एक आसान सा सवाल बना हुआ है. हाँ जी, प्लीज रीड इट. 2 + 3. नाउ दिस 3 हियर, what is this plus here, what is this? This is an order. क्या करना है इस सवाल में आपको? ऐड करना है. किसने कहा आपसे ऐड करने के लिए? इस साइन से दिख रहा है कि इस साइन ने कहा. तो ये साइन जो है ये एक तरह का एक हुक्मनामा है. ठीक है, ये एक ऑर्डर है कि ये करो, इन दो नंबर्स के साथ ये करो. ठीक है, so they have to learn that symbols are orders. Okay, जो वो सिंबल लिखा है वो करना होता है. ओके, हमसे कोई कहता नहीं है करने के लिए, लेकिन वो सिंबल जो है वो ही ऑर्डर है.
ओके ऐसा करो। ओके, मेंटल मैथ्स हम लोग बहुत करवाते हैं बच्चों को, लेकिन मुझे एक चीज़ कम पसंद आती है, वो ये है कि मेंटल मैथ्स को ना हम उसका टेस्ट रिटन में लेते हैं। तो मेंटल मैथ्स का तो टेस्ट भी मेंटली ही लेना चाहिए ना, ओरली ही लेना चाहिए। बट अगर हम ओरली लेंगे तो तभी ले सकते हैं जब बिल्कुल प्रॉपर मास्टरी अचीव्ड हो जाए, क्योंकि अदरवाइज वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बन गया। बट आप जो मेंटल मैथ्स आप क्यों करा रहे हो? मेंटल मैथ्स हम ज़्यादातर बच्चों को इसलिए करवा रहे हैं कि वो मैथ्स को क्विकली कर सके, है ना, कि हर टाइम पेपर पेंसिल पे असेस नहीं होता है। ठीक है, बहुत चीज़ें हैं जो आपको जल्दी जल्दी करनी होती है, तो आप मेंटली उसको इतना पक्का हो गया कि अभी पेपर पेंसिल की ज़रूरत नहीं, अभी दिमाग में ही आ गया। ठीक है, तो उसका जो चेकिंग है, असेसमेंट है, वो भी ओरली ही होना चाहिए। द टीचर शुड आस्क द चाइल्ड, okay, you can use worksheets from the book to teach them, but once you have taught them, सिखा दिया जब, then you should test it mentally. Makes more sense somehow. Yeah. Okay, okay, now commutative property has to be taught. Commutative property means that 3, okay, this is commutative property. मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि 2 into 3 is the same as 3 into 2. Okay, similarly 2 plus 3 is the same as 3 plus 2. Okay, so wherever they are placed, it really doesn't matter, right? The answer will be the same, and you'll get the correct answer. Right. Okay, so this is commutative property. This should be taught to children, and also some number facts need to be taught as a game. सो हमें सिंबल्स और ऑर्डर्स भी सिखाने चाहिए। जैसे मैम ने हमें एग्जांपल दिया 2 + 3 का, तो इसमें जो प्लस है ये ऑर्डर है। तो बेसिकली जो बच्चे होते हैं उनको ऐड करना बहुत अच्छा लगता है रादर देन सब्ट्रैक्शन। तो जो ये 2 + 3 है, हम उन्हें इसका ऑर्डर सिखाएंगे कि यहाँ पे प्लस लगा है तभी हमें उसको ऐड करना है। साथ ही साथ एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लगती है। जैसे एग्जाम्पल दिया 2 into 3 या 3 into 2, 2 into 3 भी वही आएगा जो 3 into 2 आएगा, या फिर 2 + 3 भी वही होगा जो 3 + 2 होगा। सो बेसिकली यहाँ पे ऑर्डर जो हो गया ये मल्टीप्लाई हो गया, या फिर हम प्लस कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व हो रही है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम और क्या सीखे हैं। Okay, now that there is addition, subtraction, multiplication and division, we are not going to talk too much about, we are not really going to talk much about it now, because we are talking about pre-math skills, है ना, जो आज हम बात कर रहे हैं, basically pre-math skills की बात कर रहे हैं। तो वो सारा फॉर्मल मैथ्स में आता है। अभी तक एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह के लिए जितना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चाहिए उसके पहले की जो स्किल्स चाहिए उसके बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी आज बात कर चुके हैं। बट आई वुड लाइक टू से कि टाइम, कैलेंडर, मनी, ये जो है ये भी बहुत इनफॉर्मली बच्चों को सिखाना चाहिए। ये भी प्री मैथ स्किल्स ही हैं। ओके, एंड दीज आर डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स टू लर्न लेटर अगर आपने उसमें शुरू में काम नहीं किया है तो मेंटली हैंडीकैप बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। तो मतलब हमें स्टार्टिंग में सिंप्लीफाइड तरीके में क्लासरूम एक्टिविटी में भी कर सकते हो, इनफॉर्मली घर में भी होना चाहिए ये। जैसे डे एंड नाइट की एक्टिविटीज़, दिन में हम क्या क्या करते हैं, रात में क्या होता है, ठीक है, लाइट्स जल जाती हैं आपके, दरवाज़ा बंद कर लेते हो, ठीक है, कपड़े चेंज कर लेते हो, बेड को ठीक कर लेते हो, डिनर करते हो, रात को थोड़ा सा टीवी देखते हो बैठ के। ऐसे एक्टिविटीज़ को डिफ्रेंशिएट करना सिखाना चाहिए। ये दिन की एक्टिविटीज़ हैं, ये रात की एक्टिविटीज़ हैं। डेज ऑफ द वीक के नाम बच्चों को पता होने चाहिए। दे शुड नो द नेम्स ऑफ डेज ऑफ द वीक, months names they should know, seasons they should know. Okay, so this is all related to time. Actually, they should learn to estimate time, andazan, you know, how much. Anticipation. Yeah, you know, how much time will it take to finish this chocolate? Okay. Okay. Actually, it will take half a second to finish the chocolate. Okay. How much time will it take to go from here to the market if we go in a rickshaw? Okay, now let's see. घड़ी से देखते हैं, चलो. So informally they start learning to get interested in knowing that there is a thing like time. Okay. Clock जो है उसके functions और parts दिखाने चाहिए बच्चे को. A simple clock like this, a very very simple clock like this, you know, numbers वाली जो clock होती है, ये actually थोड़ी पुराने ज़माने की clock है, but it should be
shown and taught. Children learn numbers very well with this. You should allow them to manipulate the clock. Definitely. इतना चिंता मत करिए कि घड़ी खराब हो जाएगी. उसको खेलने दीजिए, उससे उसको नंबर्स को आगे पीछे घुमाने दीजिए. ओके, खुद से करने दीजिए, जिससे कि उससे सीखेगा कि वो क्या क्या कंट्रोल कर सकता है. ये देखो, ये लाल वाली जो सुई है, ये तो बहुत जल्दी जल्दी जा रही है, इसको तो ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. लेकिन ये छोटी सुई है और जो बड़ी वाली सुई है, इसको हम पीछे से मैनिपुलेट करके कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है. ऑल्सो गेट देम टू मेक क्लॉक्स. जैसे आप जब छोटे थे, आपको याद है आपने स्कूल में कभी कार्डबोर्ड का क्लॉक बनाए थे, है ना? उसमें सुई भी लगानी होती थी, वो पिन से करके लगाते थे और पीछे से हाथ करके घुमाते थे. वो सारी एक्टिविटीज अब होनी चाहिए, मेंटली हैंडीकैप बच्चों के साथ करनी चाहिए. बिकॉज डूइंग इज लर्निंग फॉर देम. एवरी टाइम दे डू, दे लर्न समथिंग. बट मैम, ये एडवांसिंग एज के साथ आना चाहिए, लाइक सीजन्स का और वीक का. सीजन्स की बात इनफॉर्मली बहुत छोटे उम्र से शुरू हो जाती है. बरसात है, पानी बरस रहा है, बाहर नहीं जाओ, अभी गर्मी आ गई, अभी पंखा चलाओ, अभी सर्दी है नहीं, तो वो सुनते जा रहे हैं सर्दी का मौसम है, गर्मी है, थिंग्स लाइक दैट. एंड ऑल्सो दे एक्सपीरियंसिंग इट देमसेल्व्स, यू नो. बट हाँ, एक बहुत फॉर्मल नेम में कि मानसून आ गया, ये आ गया, ये मे बी अ लिटिल लेटर. एंड डेज ऑफ द वीक चिल्ड्रन लर्न वेरी सून. वो टीवी देखते हैं, मोस्ट ऑफ द इवनिंग दे सिट विद द पेरेंट्स वाचिंग टीवी. अलग अलग दिन अलग अलग प्रोग्राम्स आते हैं, वो सब चलता रहता है. डेज का पता रहता है. सैटरडे संडे को प्रोबेबली पापा घर पे होते हैं. फ्राइडे के दिन भैया स्केटिंग के लिए जाता है. ट्यूसडे के दिन मैं ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में अपने स्कूल में जाता हूँ. यू नो, थिंग्स लाइक दैट. सो दे आर लर्निंग, दे आर लिसनिंग टू इट ऑल द टाइम एंड हेंस लर्निंग. ओके, टाइम में पहले फुल आवर्स, हाफ आवर्स, क्वार्टर, 5 मिनट्स ऐसे करके सिखाते हैं. आई पर्सनली फाइंड के टेबल ऑफ 5 जो हम सिखाते हैं ना, 5 का पहाड़ा, उससे बच्चे टाइम देखना बहुत जल्दी सीख जाते हैं, बहुत जल्दी. एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन. सडनली दे कैन रीड द क्लॉक. ओके, क्योंकि मल्टीपल्स आते हैं उसमें 5 के. 5 के मल्टीपल्स में ज्यादातर टाइम बताया जाता है. एंड दे लर्न वेरी फास्ट. जैसे ही उन्होंने सिंबल्स पहचानना शुरू किया, नंबर्स पहचानना शुरू किया, और उनको 5 का पहाड़ा सिखाया, फटाफट घड़ी देखना आ गई. एंड घड़ी देखना आ गई इज अ बिग जंप मेंटली. ओके, दे फील कि अब हम बड़े हो गए. राइट. ओके, चाइल्ड हु इज बिटवीन 4 to 5 years of age, okay, can learn to see the clock. They actually learn to see the clock. तो mentally handicapped child जो 4 to 5 years के एज, मेंटल एज है जिसके, उसको भी क्लॉक देखना सिखा सकते हैं. Plus it also depends upon the severity. Yes, of course. It will depend on the severity of the of the disability. Okay. Measurement is learnt very informally. नापना and तोलना. Like we were saying, तुम भारी हो, तुम हल्के हो. Okay, किसका बैग भारी, किसका बैग हल्का, या आलू का झोला भारी है, मैं बैग उठाऊंगा, नहीं उठा सकता, ज़्यादा भारी है. So that learning about weights and measurements, they are hearing it all the time. Shopping is a very good idea. Taking children along with you for shopping. I insist आप mentally handicapped बच्चे को ज़रूर अपने साथ शॉपिंग लेके जाइए. उस टाइम पे मत सोचिए, ऐसा मत सोचिए कि मैं मार्केट में जाऊंगी तो वो सब लोग पूछेंगे कि इसको क्या है, इसको क्या है. वो आप उससे जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज से डिप्राइव कर रहे हो ना, उसका आपको आगे चल के कहीं ज्यादा दुख होगा. वो सवाल तो आप आंसर कर दोगे, ऐसा क्यों हो गया, अच्छा है आंसर कर दो, थोड़ा सा और अवेयरनेस भी हो जाएगी लोगों में कि ये ऐसे क्यों हुआ, कैसे हो जाता है. ठीक है. लेकिन अगर उसको अपने साथ लेके नहीं जाते हो बाहर, शॉपिंग में इतना कुछ सीखते हैं. क्या सीखते हैं शॉपिंग में बच्चे? एक तो मनी कंसेप्ट बेसिकली, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट. कभी कभी तो पैसे दो तो इतनी सारी चीज मिलती है, कभी इतने सारे पैसे दो तो इतनी सी चीज मिलती है, कभी चीज भी मिल जाती है, पैसे भी वापस हो जाते हैं. है ना? So many things they learn like that. And some things are taught, are sold by weight. Some things are sold by measurement. So some things are just sold by numbers. So many things they learn when they go. अगर जाएंगे नहीं तो ये चीजें कैसे सिखाओगे? मनी के बारे में कैसे सिखाओगे, मेजरमेंट के बारे में कैसे सिखाओगे, ये कॉन्सेप्ट्स कैसे सीखने वाले? डिफरेंट तरह की तराजू देखते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ weighing scales are available at various shops. And at different shops you find all different kinds of weighing scales. Right. So when the children are exposed to that, they go with the parents there, they see all that.
make it a point to show the child. Show him, point it out to him. Look at this weighing scale, look at that weighing scale. Okay, they learn different things like that. So take them out, show them different things. And then later on they'll be able to do simple sums and simple problem sums with measurement problems and time and calendar, all these things. So प्लेस वैल्यू और सिंपल रूल्स जैसे अभी हमने सीखे थे 42 और डिफरेंट प्लेस वैल्यूज टेंस यूनिट्स और हंड्रेड्स में सीखे थे, उसके अलावा हम बच्चे को क्लॉक कंसेप्ट भी दे सकते हैं, उसको क्लॉक को मैनिपुलेट करवा सकते हैं अच्छे तरीके से। साथ ही साथ हम उसको सीजन्स का कंसेप्ट दे सकते हैं, हम उसको वीक्स का कंसेप्ट दे सकते हैं, डेज का कंसेप्ट दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो मेजरमेंट का जो कंसेप्ट होता है बहुत इनफॉर्मली होता है, जैसे मैम ने एग्जांपल दिया तुम भारी हो, तुम हल्के हो, या ये बैग भारी है, ये बैग हल्का है। तो मेजरमेंट का जो कंसेप्ट होता है बहुत इनफॉर्मली चलता है। साथ ही साथ अगर हम बच्चे को शॉपिंग पे ले जाएं तो उसकी और स्किल्स की इन्हांसमेंट होती है, क्योंकि हम शॉपिंग पे जाते हैं तो हमें बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिलता है, जैसे मनी कंसेप्ट, अगर हमने इतने पैसे दिए तो हमें कितने वापस मिल रहे हैं या कितनी चीज़ मिल रही है, क्वांटिटी का भी एस्टिमेशन हो जाता है। जब बच्चा इन सब चीज़ों को सीख ले देन हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं सिंपल सम से, सिंपल प्रॉब्लम से। इस तरह से हम बच्चे को डिफरेंट स्किल्स सिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हम देखते हैं और क्या सीखेंगे हम। ऑल्सो जैसे हम अभी मनी के बारे में बात कर रहे थे, इट्स वंस द चाइल्ड कैन स्टार्ट रीडिंग नंबर्स, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। क्या है, उसको वेरियस थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट के प्राइसेस पढ़वाइए। आप घर पे लेके आते हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव इन सम काइंड ऑफ अ कार्टन या बॉटल भी होता है, तो उसके ऊपर प्राइस एक लिखा होता है। उसको बच्चे को सिखाना शुरू करो कि ये अलग अलग प्राइस की चीज़ें हैं, देखो इसके ऊपर कोई प्राइस लिखा है, इसका प्राइस पढ़ो, देखो ये महंगा है, सस्ता है, ये वाला ज़्यादा महंगा है, वो वाला ज़्यादा सस्ता है, किस तरह से कौन सा हमको लेना चाहिए, हमारे घर के लिए कौन सा यूजफुल है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ठीक है, किस में क्वांटिटी ज़्यादा है, वेट भी लिखा होता है चीज़ों के ऊपर, ठीक है। सो you're teaching him to handle money and to learn about money concepts, you know. And I really believe that very young children, आप छोटे से mentally handicapped बच्चे को जो 4 साल की mental age है जिसकी, उसको आप लेके अपने साथ बाजार जब जाते हो, उसके पर्स में उसको एक छोटा सा पर्स दो, उसमें थोड़े से कुछ कॉइन्स डाल के दो, और घर में भी उसको एक छोटा सा वॉलेट या पर्स रखने दो जिसमें थोड़ा सा पेटी कैश जैसे रहता है, तो पुट सम पेटी कैश इन दैट एंड लेट हिम हैंडल अ लिटिल बिट ऑफ इट। प्रेस वाला कपड़े लेकर आया है, अभी कितने रुपए देने हैं, 5 रुपीज़ देने हैं, चलो उससे बच्चे का नाम लेके बोलो, चलो उसको निकेश को बुलाओ, उसको 5 रुपीज़ देने दो, तो वो अपने आप निकालेगा, ढूंढेगा, मिलाएगा, बनाएगा, आप साथ खड़े होके सुपरवाइज करना। बट वो अब वो इंटरेस्टेड होता जा रहा है मनी ट्रांजैक्शंस में, एंड दैट इज हाफ द बैटल वन। ओके, इफ ही इज गेटिंग इंटरेस्टेड एंड मोटिवेटेड इन doing it, then he is going to motivate himself to learn a lot like that. पर मैम जैसे ये मनी कंसेप्ट है, ये एक्सचेंज ऑफ मनी है, इससे पहले कुछ हमें मैचिंग, नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉइन सिखाना भी जरूरी होता है। एब्सोल्युटली सिखाना होता है। यू हैव टू टीच देम हाउ टू आइडेंटिफाई कॉइन्स एंड नोट, दे हैव टू नो दैट मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो मनी है, इट्स ओनली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, चाहे गुड्स हैं चाहे सर्विसेज हैं। उसको 10 रुपीज़ बनाना, जैसे कि वो ये इधर बहुत सारे कॉइन्स हैं, उसमें से उठा के उसको 10 रुपीज़ बना के देना है, 1 2 3 करके गिनो, फिर काउंटिंग इन 5 सीखो, 5 के कॉइन्स जो हैं उनको काउंट करके बनाओ। एंड अगर ये 10 रुपीज़ है, अगर ये मिला के 10 रुपीज़ है, तो इसमें कितने 1 रुपी के कॉइन्स लगेंगे, ऐसे सीखे। सो मेकिंग एंड ब्रेकिंग अप मनी, दैट ही हैज़ टू लर्न। Like we said, he has to learn to read the price on objects. And then you do simple money addition and subtraction, then you go on to bigger money transactions, and later on to problem sums with money. Okay. Now what we'll be talking about now is, first we'll talk a little bit about activity based learning, and then we'll go on to the teacher's role. Okay. So what is activity based learning? बहुत सुनने में आता है ना, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। टीचिंग सर्टेन पर्टिकुलर स्किल थ्रू एक्टिविटीज rather than going on to more abstract form, activities provide करके हम सिखाएंगे बच्चे को। मतलब doing and learning, करो और सीखो, doing and learning. Now why is this important? Because it will be more retained in the memory. अगर हम करके सीखेंगे तो ज़्यादा देर तक याद रहेगा। Right. Okay, just like we said, अगर आप बाइसिकल चलाना खुद से सीखते हो तो you know how to do it, for life you know how to do it.
Now, also why it is important to do a lot of activity-based learning is that a lot of learning in the classroom is abstract. Okay, so it's difficult for the child to understand. When it is difficult for the child to understand, then he is not an active participator in that. Okay. Okay, and what happens when he's playing and learning and doing, it helps in developing skills for the basic concepts in maths. Now, the activity should be the base of learning, but it is not like a recipe की तरह नहीं है. ऐसे 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 इसको काटो, इसको छौंको, इसको ऐसे करो. No, they have to just keep doing it. They have to keep doing it to learn again and again and again. They can do the activity in their way, but you have to leave them with the material. You have to let them actively participate in what is going on. They have to be, they have to be active learners. They're not passive learners. एक क्लास है जहाँ टीचर खड़ी हुई है, साफ सुथरी क्लास है, लाल पीले डेस्क पेंटेड है और सारे बच्चे दूर बैठे हुए सीख रहे हैं. No, they have to be right there. The teacher has to be in the middle of the classroom. All the material has to be there. The children have to be all over her and all over the material. Like you said, individual or group learning. Yeah. Even if it's a group learning, then it's good if it is an activity-based learning. They learn much better. Pre-maths concepts तो बहुत सारे एक्टिविटी से ही वो सीखने वाले हैं. ये हम लोग पहले बहुत बात कर चुके हैं आज इसके. एनवायरनमेंट से वो बहुत कुछ सीखेंगे अगर वो एक्टिव रहेंगे तो. होम में बहुत कुछ सीखेंगे, किचन में बहुत कुछ सीखेंगे. ये मेरे जो चम्मच का ढेर है ये सारा एक किचन से 2 मिनट में उठाया गया. अब आप सिर्फ ये देखो कि कितने तरह तरह के स्पून्स एक किचन में मिल सकते हैं. जस्ट लुक एट दिस. दीज आर बिग स्पून, सर्विंग स्पून्स, वो भी अलग डिजाइन है. फिर देयर आर अदर स्पून्स. This is an interesting spoon, okay? Right. And there are some other spoons and there is some other little spoon. So kitchen के utensils में इतना variety in shapes and sizes मिल सकती है. Okay, that just a trip to the kitchen for the child. उसको kitchen में नीचे बैठा रहने दो जमीन पर और उसको कुछ सामान दे दो. kitchen का safe stuff. It has to be very safe stuff जिससे उसको चोट ना लग जाए. ठीक है. And then see how much he is learning with that. आप बीच बीच में थोड़ा बोलते जाओ. अच्छा बड़ा चम्मच से खेल रहे हो, इतना बड़ा है मुंह के अंदर कैसे जाएगा, छोटा वाला डालो. चीनी छोटे चम्मच से खाओ. Things like that. Just give the little bit of language there and they will learn. In the garden they can learn a lot of things. Do you think they can learn? हम लोग शुरू में हमने बात करी थी ना. Going out in the park में कितना उसको मैथ्स दिखाई देता है. In the rooms they can learn the size of the rooms, the doors, windows, height. ऊंचा है, बड़ा है, छोटा है. ठीक है. लेफ्ट में ये चीज रखा है, राइट में रखा है. देन रोड पे खड़े होके बहुत कुछ सीख सकते हैं मैथ्स के बारे में. जैसे हाइट सीख सकते हैं, बस बड़ी है, कार छोटी है. साइज, यस, साइज सीख सकते हैं. स्पीड सीख सकते हैं. डिस्टेंस. Okay, so much they can learn. Just standing on the roadside. Numbers भी सीख सकते हैं. कार के 4 टायर्स हैं, स्कूटर के 2 टायर्स हैं. और जब बच्चे और थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, जब स्कूल, जहाँ हम लोग भी स्कूल बस में जाते थे, जब वापस आते थे तो जितनी कार्स रास्ते में होती थी ना, वो नंबर को लिखते जाते थे अब एक किसी कागज पर, और किसने ज्यादा नंबर्स लिखे वो जीता. So they are fascinated by numbers. Children are absolutely fascinated by numbers and maths. So give them opportunity. Shopping में, parks में, क्लासरूम में, स्कूल में, बस में जाते टाइम, हर जगह तो मैथ सीखने की अपॉर्चुनिटीज है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट दे कैन डू. तो आज हमने सीखे प्री मैथ स्किल्स. प्री मैथ स्किल्स में हमने देखा बच्चों को किस किस चीज़ों में प्रॉब्लम आती है. जैसे प्लेस वैल्यू सीखने में प्रॉब्लम आती है या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सीखने में प्रॉब्लम आती है. जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था, 42 करके एग्जाम्पल दिया था. जो मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड है वो 402 लिखेगा,
rather than writing 4 और 2, तो हमें उसको वो भी सिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ जैसे मैम ने प्लेस वैल्यू का एग्जाम्पल दिया था, हमने एग्जाम्पल लिया अगर 79 का एग्जाम्पल लिया, तो मेंटली रिटार्डेड जो बच्चा है उसको सीखने में प्रॉब्लम होगी कि 9 की वैल्यू छोटी है 7 से, अगर हम प्लेस वैल्यू के टर्म्स में कंसिडर करें, क्योंकि 9 जो है वो यूनिट्स के प्लेस में आ रहा है और जो 7 जो है वो टेंस के प्लेस में आ रहा है। ऐसे ही हमने एग्जाम्पल लिया था 777 का, जिसमें तीनों नंबर सेम है बट उनकी प्लेस वैल्यू डिफरेंट है, एक है यूनिट्स की प्लेस में, एक है टेंस की प्लेस में और एक है हंड्रेड्स की प्लेस में। फिर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सीखी और सिंबल्स और ऑर्डर सीखे। ऑर्डर जैसे अगर हम लिखेंगे 3 + 2, तो इसमें जो प्लस है वो एक ऑर्डर है, वो बता रहा है कि हमें एडिशन करना है। और यूजुअली जो बच्चे होते हैं उनको एडिशन ज़्यादा पसंद होता है रादर देन सब्ट्रैक्शन और एनीथिंग एल्स। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है हमारी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में काम आती है। फिर हमने देखा कि हम बच्चे को डिफरेंट मेजरमेंट सिखा सकते हैं, हम बच्चे को टाइम सिखा सकते हैं क्लॉक के थ्रू, हम वीक सिखा सकते हैं, सीजन सिखा सकते हैं। बहुत सारी डिफरेंट ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम उसको एनवायरनमेंट में सिखा सकते हैं। जैसे अगर वो घर में है तो घर में वो रूम का साइज़ देख रहा है या दरवाज़ों के साइज़ देख रहा है, वो वहाँ पे भी बहुत कुछ सीख सकता है। या अगर हम उसे गार्डन में एक्सपोजर दिला रहे हैं तो बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करेगा, जैसे लीव्स की साइज़ या उसके शेप एक्सेट्रा। और रोड पे है तब भी वो बहुत चीज़ ऑब्जर्व करेगा, जैसे हाइट, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब ऑब्जर्व करेगा। तो बेसिकली जो प्री मैथ स्किल्स है, जो मैथ्स है, वो बेसिकली काउंटिंग के ऊपर बेस्ड है। जो इसका मेन बेस है वो काउंटिंग है। साथ ही साथ हमें इसमें लॉजिकल रीजनिंग और डिस्कवरी बच्चे को प्रोवाइड करनी होती है कि अगर मास्टरी एक पर्टिकुलर स्किल पे आने से पहले उसको दूसरे स्किल पे हम प्रोग्रेस नहीं करेंगे। साथ ही साथ एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो होता है, जैसे रोट, कंसेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट और सिंबल। रोट लाइक रैम्स भी हम बच्चे को सिखा सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, जो कि बेसिस है आगे की मीनिंगफुल काउंटिंग का। सो दिस इज़ द डिस्कशन अबाउट टुडेज सेशन। इट्स टाइम फॉर क्लोजिंग द सेशन, बट बिफोर दैट मैम कुछ बताना चाहती हैं हमें? What I wanted to say is that we really need to keep many things in mind. The teacher's role is very very important. Okay. कि आप बस उस बच्चे को थोड़ा सा आगे ले जाते हो, आपका उससे ज़्यादा कोई रोल नहीं है. You have to be excited about maths yourself. Right. You have to be very excited about the subject that you're trying to teach. You provide the things and then step back. You don't do everything. You have to let the child do everything. That is how he's going to learn. And he's going to learn a lot from water and sand play. Okay. This. And that's it. Okay. See, we've got 2 trays of sand. रेत है और एक बोल में हमारे पास पानी है. ठीक है. और इसके अंदर सामान क्या पड़ा हुआ है? ये जो आपका कॉमन घर का सामान है, चीज़ें पड़ी रहती हैं ऐसे ही, बस वही हैं. डिब्बे हैं, कुछ छन्नी है, स्पंज है, एक फनल है, ओके, एक इस तरह का स्पॉन्ज है, एक डिब्बे का ढक्कन है. ऐसे कॉमन सी चीज़ें हैं मेरे पास. स्पून्स भी 1-2 डाल सकते हैं उसमें से उठा के. ठीक है. अब छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको सैंड और वाटर प्ले बहुत कराया जाए. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कंस्ट्रक्शन लेबर होती है ना, रेजा के बच्चे जो हम लोग बोलते हैं, जो वो बेलदारी का काम जो लोग करते हैं, जो मकान बनाने का करते हैं, उनके बच्चे मैथ्स में बहुत तेज होते हैं, बहुत तेज. और आगे चल के वो मैथ्स में बहुत समझदार एडल्ट्स भी होते हैं. रुपए पैसे का हिसाब किताब बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत बचपन से बहुत अच्छे से सीखते हैं. तो ये पाया गया कि दे आर प्लेइंग विथ व्हाट? They don't have fancy blocks and toys and dolls to play with. They are playing with sand the whole day, they are playing with water the whole day, and they are playing with bricks the whole day. तो bricks की बजाय हम लोग blocks को use करते हैं classrooms में. Okay. But every class for pre-maths children, for that level of children till about 5 years of mental age के जो बच्चे हैं, उनकी classes में it's a good idea to have a big sand pit. Okay, and just put some material like that and the children will sit and play there. Now what are they going to learn? What are they learning? Would you like to play? They're learning different shapes. Yes.
प्लस एक सेंसरी इंटीग्रेशन का बहुत chances सेंसरी मिल रहा इनपुट है. दिस इज अ Yeah. डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सचर. दे आर लर्निंग अ लॉट अबाउट वॉल्यूम एंड कैपेसिटी. दे आर लर्निंग अबाउट हैवी एंड लाइट. दे आर लर्निंग अबाउट बिग एंड स्मॉल. एंड दे आर लर्निंग अबाउट यू नो लाइक छन्नी में डालेंगे तो रेत उसके थ्रू नहीं जाएगी. Okay, and if they put the same channi in water, then all the water will just flow through that. Okay, it will not hold anything there. Right. That they will learn. When they are playing with sand, they will learn that अगर आप थोड़ा सा रेत को गीला कर देते हो, just slightly उसको wet कर देते हो, then it takes the shape of the vessel that you put. You can take out a shape from that. You know, you can Right. just take out a round shape from a round Vessel. vessel or a box. And they also learn that to fill this katori they need so many spoons of sand. If they have a big spoon, they will need only 2 spoons. So this is a lot that they are learning here. If it is a square box, a different kind of shape is going to come out. Now the same thing in water. Okay, so you can shift the same material. मैं अपने ज़्यादातर mentally handicapped बच्चों के parents को बताती हूँ कि they should what they should do is कि ये खेल रेत का खेल नहाने के पहले करा लो. Right. Okay, and this game water play they can do while they are taking a bath, because it is best done at the time when it is being done. Right. Mother को भी stress कम हो जाता है फिर, है ना. So things they learn here now. अब water play में क्या सीखेंगे कि अगर वाटर थोड़ा सा बाहर गिर गया तो उसको नहीं उठा सकते हो. रेत गिर गया तो उसको उठा के वापस डाल सकते हो. एंड वाटर विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दैट इट इज केप्ट इन. छन्नी में पानी नहीं बचेगा. अगर फनल होगा तो उसके थ्रू धीरे धीरे करके पानी निकलेगा. और अगर फनल को रेत में डालोगे तो कुछ भी नहीं. अगर गीला सा रेत है ये इसलिए कुछ भी नहीं होगा. एकदम सूखा रेत होगा तो धीरे धीरे करके नीचे निकलेगा. और कुछ चीजें पानी अब्सॉर्ब कर लेती है, जैसे स्पॉन्ज. जैसे ये स्पंज है, ये पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन रेत में इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. देयर आर सम थिंग्स दैट विल swim at the top. There are other things that will sink down. So much about volume, about capacity, about wetness. चीज गीली, अगर कपड़ा गीला हो जाता है तो बहुत देर में सूखता है, तो they are learning about time. अगर स्पंज गीला हो जाता है तो बहुत जल्दी सूख जाता है, उसको आप निचोड़ सकते हो सारा पानी उससे. So again they are learning a lot of things like this. This is going to be a very good basis for them to build a very strong maths structure on. राइट. सो हम आशा करते हैं कि आज आपको प्री मैथ स्किल्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. इतनी वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स जो मैम ने हमें दिए हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर क्लोजिंग आवर सेशन, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू थैंक आवर व्यूअर्स एंड मैम फॉर कमिंग ओवर हियर एंड डिस्कसिंग ओवर दिस. थैंक यू मैम. Thank you so much.